अपने पापा से क्या इनहेरिट किया है? पापा से जायदाद. This is a joke. It's my sense of humor. In your house also you have to earn respect. मेरे दो प्लान थे. Either Spielberg should launch me or Anurag Kashyap should launch me. That is quite a... पापा को झटका ये दो ही चीजों से लग सकता है. आपकी चाइल्डहुड ही एक डेविड धवन गोविंदा फिल्म थी. सर जी. जब लारा मुझे दी गई थी and I got her, I'm not joking. She smiled. I think it is a miracle. People have the right to criticize you, and I'm fully okay with that. We are here because of the audience today. There's no other reason why we are here. For what it worth, आपकी स्माइल इतनी अच्छी है यार. नहीं मेरी तो बहुत मुझे तो पता है अच्छी है. मुझे प्रॉब्लम नहीं है खुद के स्माइल है. हाय निखिल. हाय. आज किसके साथ शूट कर रहे हैं? आज हम एक ऐसे आदमी के साथ शूट कर रहे हैं जिनकी सनफ्लावर एनर्जी है. तो मैं सनफ्लावर्स के साथ हैंग आउट कर रहा था. Tell us a little bit more about this guest. यार वो एक्चुअली दिखने में है स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप के, और एक्चुअली रियल में भी स्वीट इनोसेंट स्वामी चाहे हो ना हो बहुत ही प्यारे एक्टर हैं. ही इज समवन दैट वी ऑल फाइंड इनक्रेडिबली क्यूट, स्वीट. ही इज बीन अ हिट मेकर. ही इज बीन जेन्युइनली सर्टिफाइड पूकी, एंड वी हैव हिम ऑन आवर शो. इट्स नन अदर देन वरुण धवन. Varun also became a girl dad recently. यार इसलिए तो मैं बुलाना चाहता था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्चुअली सिट विद समवन हु शेयर्स द सेम जॉय ऑफ बीइंग अ गर्ल डैड लाइक मी. बट मैं उनके चाइल्डहुड के बारे में पूछना चाहता हूँ, मैं उनकी वाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ, उनकी लाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ. सो आई just cannot wait to sit across with him and have a heart to heart. So should we start? What are we waiting for? Let's go. Welcome to Be a Man Yaar, presented by the good folks at Rohini Nilekani Philanthropies in association with Dove Men Plus Care. Varun, thank you so much for being here. I'm so excited to have you. और पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, आप इतने सही लग रहे हो. You are looking so good. आपने इस शो का स्टैंडर्ड फैशन स्टाइल क्वेश्चन तो बहुत ही आगे कर दिया. नहीं मैं बच्चे होते हैं ना कि रोज उनको कुछ नया कैरेक्टर बनना है, कुछ नए कपड़े दे चूज कि उनको क्या पहनना है. तो मेरा भी ऐसा ही है. मेरा जो मूड होता है उस दिन तो मैं वैसे ही कपड़े चुनता हूँ और ऐसे ही ड्रेसअप करके मैं निकलता हूँ घर से. तो ये आज पता नहीं क्यों ऐसा था, बट था. I follow that, I chase that. I like. तो बहुत ही सही लग रहे हो. Thank you. हमारा एक्चुअली जो सबसे पहला सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड अनबॉक्सिंग बॉयहुड. हम क्या करते हैं, एक बक्सा लाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं. उनमें से कुछ ना कुछ ऐसे शायद आपको दिख जाएगा जो आपकी मेमोरी भी हो सकती है. सो प्लीज खोलिए, देखिए. आपको बचपन में मेरे भाई के पास एक ब्रीफकेस होता था जिसमें वो कुछ चीजें डालता था और उसे काम का बॉक्स बुलाता था. एंड ही वुड वॉक अराउंड लिटरली, माय ओल्डर ब्रदर रोहित. उसमें क्या चीज होती थी? पेंसिल, पानी, यही कुछ पेपर्स, कुछ ऐसा. वो उसको लगता था कि ये बहुत जरूरी है. बट लेट्स सी व्हाट दिस. ओह वाओ, ओके. बहुत सारी चीजें हैं. ओके. तो आई थिंक I'll start with the earliest memory, which is me with my older brother Rohit. And ये कोई बीच पे था, कहीं पे था. And yeah, this is how we are even today, I guess. खाली हम लोग कंधे पे हाथ नहीं रखते अभी, बट और कपड़े पहनते हो. और कपड़े शायद वो पहनता है. वो भी नहीं पहनता एक्चुअली, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है. बट हाँ, दिस इज अ वेरी अर्ली मेमोरी. आई रिमेंबर दिस. इस समय आप लोग कितने साल के थे? मैं तकरीबन 2 का होगा. And he must be 5. It was definitely a very good phase. I become मैं इतना confident नहीं था. 2 साल की उम्र के अंदर क्या ही confidence? यहाँ पे confidence बहुत आ गया था. इन लोगों से confident है, माँ और भाई से. इनके वजह से confident हूँ. I want to ask you a lot of questions. ये बहुत ये मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक ये जॉगर्स पार्क में या किधर लिया गया था. हम लोग ने फोटो ली थी. Is this a t-shirt? Is it a dress? It's a t-shirt. It's not a dress. नहीं, क्यों करते थे पेरेंट्स तो? हाँ, करते थे. सारे मैं खुद कोई शो प्लेज वेज में करता था बचपन में, तो मैंने किया है. सिंड्रेला का रोल भी किया है. ऐसे कोई सिंड्रेला का रोल किया है. हाँ. See this, ये वाला मैं रिमेंबर करता हूँ. आई रिमेंबर दिस वेरी वेल. दिस पिक्चर वाज क्लिक्ड बाय अविनाश ग्वारेकर, और ये हमारे जुहू के घर में था, न्यू राइजिंग सन में. माय मदर डन अप दिस हाउस, और ये फोटो खिंचाने के लिए मेरे डैड बहुत रिलक्टेंट थे. क्यों? क्योंकि ये क्या है फैमिली का फोटो शूट. एंड अविनाश ग्वारेकर वाज डूइंग इट, एंड अविनाश इज अ फैमिली फ्रेंड. ही वाज रियली लाइक एम्पिंग अस अप एंड टेलिंग अस कि कर लो. तो पापा को इस बात से क्या आता था कि ही वाज वेरी, ही इज वेरी लाइक दैट manly man, like उनको he is not into those things. Vanity. He likes being behind the camera. He's not कि मैं सज धज के फोटो ले लूँ and all that stuff. That's how he is. This is Angel. This is Natasha's dog, Angel. And this is Joey.
Both are babies, both are beagles, but both are different pups actually. This obviously is like the biggest memory ever in life. You know, these cards. I remember playing these cards in school and winning all of them. And obviously Austin is there, Rock is there, Triple H is there. Rock being the Rock was biggest. your Yeah, your by guy. far, by far. So you got a VHS, okay, of this. That's Judwa, the original Judwa. You know, Judo was also one of my favorite films growing up. टीवी पे आती थी, हम लोग रिकॉर्ड करके बार-बार सेम टू सेम चीजें लगा के Same, मैं और same. मेरे भाई देखते थे. Oh shit, I remember this. My name is Khan. मैं एक एडी था इस पे. सिद्धार्थ भी एडी थे मेरे साथ. So me and Siddharth both were ADs on this, and many other people who. Lot of fun times, getting shouted a lot, but lot of fun stuff. By whom? Our first AD, Karan Malhotra, not Karan Johar. Okay. Karan Malhotra was strict, but I'm glad he was strict because I learned a lot because of that. Yeah. I love how excited you are about all of this. I love marbles. I love this shit. अमृत को मारेंगे इससे. बजट देता नहीं है आपको. Yeah. Amrit is my partner and you are also very dear friends with Varun. For Yeah, context. Amrit Pal is a partner also in Yuva for context, and he's also a producer. And Yuva being his most successful company, which Of he course. says very proudly. I think मुझे आपके बचपन घर में काफी चीजें पूछनी है. बचपन मेरा अनबिलीवेबल था. मेरी जवानी से बेटर मेरा बचपन था. क्यों? क्यों मतलब it was because I think I was a lot into stories and dreaming and बहुत ही मैं अपना imagination मेरा बहुत wild था. तो कहीं ना मैं एक लाला लैंड में जी रहा था. I was living in a वरुण वर्ल्ड Okay. जो मैंने क्रिएट किया था. और वो शायद इसलिए था क्योंकि घर पे सारे आर्टिस्ट थे. मॉम मेरी माँ एक इंटीरियर डिजाइनर थी. मेरे डैड एक डायरेक्टर थे. मेरे भाई एक फिल्म मेकर बनना चाहते थे. तो मुझे हर कोई कहानी सुनाते. नानी सुनाती थी कहानी, दादी सुनाती थी कहानी, पापा कहानी सुनाते थे, मम्मी कहानी सुनाती थी. Wow. और बस मुझे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था और कहानियाँ बनाना भी बहुत पसंद था. Okay. मैं बहुत कहानियाँ बनाता था क्योंकि मैं जो भी कहानी बनाता था वो कभी ना कभी ट्रू भी हो जाता था. Explain. Some weird shit like जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा हाई क्या होता था. हम लोग बस में जा रहे थे और एक लड़की थी जो मुझे पसंद थी. लाइक आई हैड अ क्रश ऑन हर, जो भी था. एंड हम लोग ऐसा कुछ गेसिंग गेम खेल रहे थे. तो उसका फेवरेट कलर मैंने गेस कर लिया था कि लाल होगा. Okay. और उसका फेवरेट कलर लाल था. I love how this is a foundational memory for you. जब आप छोटे होते हो तो तब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग मीम था ना कि अगर वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती तो जब मैं स्कूल जाता हूँ वो वही टाइम पे स्कूल क्यों आती है. जो कपड़े मैं पहनता हूँ वही कपड़े पहन के स्कूल क्यों आती है. और वो छोड़ो, जब मैं स्कूल छोड़ के जाता हूँ तो वो भी स्कूल छोड़ के वही टाइम पे क्यों जाती है. Fair point. I can't argue with that. So yeah, you're in that. वरुण वर्ल्ड तो मुझे अभी I want to be part of it. मुझे लगता है कि काफी सही वर्ल्ड है. और नहीं, और आप सपोज बहुत समय तक एक्चुअली टिल इट बिकेम अ लिटिल हार्मफुल आई फेल्ट. मैं जब गाने सुनता हूँ तो मैं आई एम बेसिकली डांसिंग ऑन दैट सॉन्ग इन माय माइंड. कोई भी गाना हो, चाहे मेरा भी गाना नहीं हो. Okay. आई रिप्लेस जो एक्टर है या जो रैपर है या जो आर्टिस्ट है इंटरनेशनल या इधर के. एंड ये गाना अब मेरा है और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. और मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं इट गोज आई गो इनटू दैट वर्ल्ड. देन आई हैड टू स्टॉप ब्रेकिंग आउट ऑफ दैट बिकॉज आई स्टार्टेड गेटिंग बहुत ओवर थिंकिंग होने लगी. तो यू हैव टू स्टे इन द प्रेजेंट. हमेशा आप वो ट्रिप पे नहीं जा सकते हो. क्लियरली आपकी फैमिली इतनी अच्छी और प्यारी और सपोर्टिव थी कि आप एक दुनिया में रह सकते थे. आपको सपने देखना ही होगा. अगर आपको सपने सच करने हैं तो आपको सपने देखना होगा पहले. बहुत सपने सच हुए. नहीं, काफी सच हुए, काफी सच नहीं भी हुए. यू हैव टू वो भी सीखना पड़ता है ना कि ये नहीं हो. कभी मैं क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आया. Okay. वो सपना ही रह गया. I'm sorry. Yeah. It happens. I thought it just happened. Sure. But apparently उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है. तो वो सपने से ठीक नहीं होता है. क्योंकि मैं एक बार था कि जब मैंने बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे मुझे, और मुझे वो डांट वाट पड़ी थी एंड मेरा ईगो हर्ट हो गया था 7th या 8th स्टैंडर्ड में. तो मैं इतना अपसेट होके, और तब मैं जब रोता था तो मैं बहुत फिल्मी बच्चा था. हाँ. तो मैं मिरर में जाके रोता था. हाँ. क्योंकि मुझे देखना था मैं कैसे लग रहा हूँ रोते हुए. तो मैं जाके रोता था. एंड कैसे लगते थे? फिर मैं रोता था और फिर मैं रुक जाता था. फिर मैं देखता था कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा होता था.
And then ये सब it was just my relation with my mother, I think. And then my mother would start laughing all the time. But एक ये था कि मेरी mom हमेशा चाहती थी कि मैं बहुत अच्छा करूँ जिंदगी में, मैं पढ़ूँ और बहुत अच्छा करूँ पढ़ाई में, जो भी मैं करूँ मैं excel करूँ उसमें. So my mother was very ambitious for me. हमेशा से रही है वो. And even for my brother. बट जब मैं देखता तो उसको इतनी मार पड़ती थी या इतना डांट पड़ता था उसे, क्योंकि 10th में ही डिडंट डू वेल, 10th स्टैंडर्ड में उनको अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो ये वो तो जो आप छोटे बेटे थे घर के, यू आर द यंगर सिबलिंग को तो या तो बहुत पैम्पर करते हैं तो शैतान हो जाते हैं, या फिर यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं मिलती, या फिर कभी कभी मेरे भाई ने मुझे बहुत पैम्पर किया. अच्छा. If I was pampered by my brother. I was not pampered by my parents. ओके. भाई ने पैम्पर किया मुझे. कैसे? सब मेरे हिस्से की जो मार है वो खाता था, मेरे हिस्से की जो डांट था वो खा लेता था, और he had to be more responsible. उसके टॉयज मुझे मिल गए, उसके कपड़े मुझे मिल गए, बहुत कुछ. यू नो यू हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स इन सो मेनी ऑफ योर इंटरव्यूज. अपने भाई के बारे में इतने प्यार से आप बात करते हो. आप कहते हो वो आइडियल आदमी थे. आपने ये भी एक बहुत प्यारी बात बोली थी एक कॉन्वर्सेशन में कि आपकी ज़िंदगी का बेस्ट फेज तब है जब आप अपने भाई के साथ रूम शेयर करते थे, जब आप उनका अंगूठा पकड़ के सोते थे. सो टेल मी अबाउट, लाइक आई जस्ट वांट टू नो अबाउट रोहित. मुझे लगता है कि मैंने कभी रोहित को चांस ही नहीं दिया बच्चे बनने का. ओके. क्योंकि जब मैं आ गया, ही हैड टू जस्ट ग्रो अप, यू नो. और हमारी उम्र में इतना भी अंतर नहीं है. वो मुझसे सिर्फ 3-3.5 साल बड़े हैं, तो उन्हें वो वक्त, मुझे इस चीज का गिल्ट होता है कभी कि मैंने उनको वो वक्त ही नहीं दिया बच्चे बनने का. बिकॉज मैं इतना नॉटी था एज अ किड. आई वाज वेरी नॉटी. आई वाज अ हैंडफुल. आई वाज अ वेरी नॉटी किड. एंड आई वाज अ वेरी, व्हाट डू आई से, लाइक मैं अगर कोई रूम में आ जाता था, मैं वो अटेंशन ग्रैब कर ही लेता था, बिकॉज मैं इतना डिमांडिंग था, नीडी था मे बी. मैं स्पेस ही नहीं देता किसी और को. तो मुझे पता ही नहीं है कोई कोर मेमोरी जहाँ मैं बैठ के देख रहा हूँ कि रोहित हंस रहा है. मुझे ये दिख रहा है कि मैं हंस रहा हूँ तो रोहित स्माइल कर रहा है. आई डोंट रिमेम्बर डूइंग एनीथिंग व्हिच मेड कि ये हंसी रोहित की थी और उसने कोई चीज़ एंजॉय की. उसका एंजॉयमेंट ही मैं था. तो मैं, यू नो व्हाट आई मीन. या ऑफ कोर्स. आपने बात की रोहित से इसके बारे में? I mean, I think it's too sensitive a topic. हाँ, बात की है, 1-2 बार की है, बट एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है कि अभी हम पास्ट को we bring. Why do you think he was so burdened? कि मतलब बड़ा बेटा था इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कुछ? Because I was a lot. मतलब बचपन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कुछ जाके मतलब काम वाम नहीं करने वाला है. बट ही डिड स्टार्ट वर्किंग अर्ली. एक टाइम था जब रोहित मेड हिज फर्स्ट फिल्म, जब उन्होंने देसी बॉयज बनाई थी, जब उन्हें चेक मिला था, तो फिर ही केम एंड टोल्ड मी कि नाउ डोंट टेक एनी मनी फ्रॉम मम्मी पापा, आई विल गिव यू मनी. तो फिर मैंने बंद कर दिया था मॉम डैड से पैसे लेना. मैं उससे ही लेता था. How sweet है. और काफ़ी लेता था. अगेन एज अ एल्डर ब्रदर मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है सुनकर. मेरा हार्ट इज मेल्टिंग कि इतना कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई से इतना प्यार. I love my older brother the most, I think, in the world. Maybe Joey and then him, but it's a close Makes tie. sense. आप जैसे बोल रहे हो हंस पाते थे साथ में. डू यू थिंक ही वाज आल्सो अ स्पेस फॉर यू जावा, जिसके सामने आप रो पाते थे? या बहुत सब कुछ करता था उसके सामने. उसको चांस ही नहीं मिलता ना कुछ करने के लिए. वही तो, रोना हंसना. मेरे बड़े भाई तो मुझे वैसे ही लगता है बहुत सही होते हैं, you know, as an नहीं, पर हमारे झगड़े वगड़े भी हुए हैं. ऐसा नहीं कि बहुत झगड़े होते थे. टीवी के रिमोट पे क्रिकेट में बैटिंग कौन करेगा पहले, और इफ ही मेड फन ऑफ माय फ्रेंड और माय फ्रेंड्स, क्योंकि मैं किसी से भी दोस्ती कर सकता हूँ. ओके. मेरा वो एक नैक है, मेरी दोस्ती किसी से भी हो जाए. अगर मैं बाइक में सपोज हवा भरने के लिए ले गया था, तो उधर का जो आदमी हवा भर रहा है उसका बेटा उधर होता था छोटा, मैं उससे दोस्ती कर लेता, उसके घर ले आता था खाना खाने के लिए. तो मैं ऐसे काफी कैरेक्टर्स को घर लेके आया हूँ. And my parents would be like, what are you doing? Like, who is this person? And it doesn't have to be a child. It can be a grown up also. वो उस वक्त पे I never saw कि ये बुरा है या ये बड़ा है तो मेरी दोस्ती नहीं हो सकता है, नहीं हो सकती है, and ये सब हो सकता है. मैं बस वर्ल्ड को, मैं दुनिया को बहुत ही न्यूट्रल तरीके से देखता था कि सब अच्छे ही है ना. किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो बुरे बनेंगे, वरना सब अच्छे हैं, सब सच्चे हैं, सब ऑनेस्ट है. मुझे ना बहुत कैल्विन एंड हॉब्स वाली वाइब आ रही है आपसे कि ना
हाँ, but if you, I don't know if you've read those comics, but you're reminding me of Calvin in many ways. You know, a naughty kid, you know, who has this beautiful world जहाँ पर उसके best friend है maybe उनके, that time. and he always is in that world, and you know, and he's happy in that world. You know, and I mean, I wish more people have childhoods like that. ये बात सच है, मुझे बचपन में प्यार बहुत मिला, more than wealth and ये सब चीजें, because we were not very well to do, as well to do we became later on. We were not very well to do. We were very, I think, lower middle class to middle class. Maybe lower middle class at one point, because my dad's career had not taken off to that level, Sure. you know, initially. But it didn't matter to me because I was just, आप मुझे कहीं भी, you know, रख लो, मैं ठीक हूँ. आप मुझे जमीन पे भी सुला लो, बेड पे सुला लो, कुछ भी, didn't matter to me. I was not fixed in my ways. तो सबसे ज्यादा प्यार एक तो भाई से आपने बोला है, and मम्मा एंड पापा में से who was the one who would? पापा तो घर पे होते ही नहीं थे उस वक्त पे, यू नो, ही वाज वर्किंग राउंड द क्लॉक. वो मतलब कभी-कभी साल में शूटिंग 2 मूवीज एट द सेम टाइम. तो पापा तो मुझे जेन्युइनली, मेरा जो रिलेशनशिप है अपने डैड के साथ बचपन में था एक फन फिगर जो आते थे जाते थे, बट इट्स ओनली आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड मुझे प्रॉपर्ली याद है मेरे कॉन्वर्सेशंस डैड के साथ. बचपन में इट वाज मॉम, इट वाज मेनली माय मॉम. माय डैड वाज वर्किंग वेरी हार्ड यार, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे. बट उस समय आपको पता होता था कि मतलब वो हार्ड वर्क कर रहे हैं इसलिए एक्सेस हाँ, नहीं बोला है? जाता था. मम्मी बोल देती थी ये जो खाना तुम खा रहे हो इसलिए क्योंकि तुम्हारा बाप काम कर रहा है. सो ये सब डायलॉग बहुत बोले गए. या कुछ बुरा या कोई फिल्म नहीं चलती थी पापा के, तो वो बोल देते थे अभी तो ये फिल्म नहीं चली है, आगे पता नहीं क्या काम करेगा, तो यू हैव टू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस. तो मैं बोलता हूँ मेरा एक्सपेंस कौन सा है, मैं 4 साल का. हाँ, मैं वैसे ही ऑटो में जा रहा हूँ स्कूल, ऑटो में आ रहा हूँ, मैं पैदल जाऊँ क्या, मैं क्या करना चाहिए मुझे, आप बताइए. एंड वो होता है ना कि लोग बोलते हैं कि हमारा स्कूल वो सेट था, हम लोग तैर के जाते थे स्कूल, वो सब थे. दो माय मदर एक्चुअली वाज फ्रॉम अ वेरी वेरी रिच फैमिली, एंड बट डैड वाज लाइक अ क्रेजी स्टूडेंट. ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम FTI एंड ऑल दैट. Yeah. बट ambition wise, दो मेरे जो पिताजी है वो बहुत ambitious है, but my mother was very ambitious for the family. For the family. Yeah, she was the pushing force, the guiding force. हमारी मदर की जनरेशन अनफॉर्चुनेटली a lot of that time उनका sacrifices में कितना समय जाता Yeah, था. हर माँ का I Yeah, think, yeah, so mothers much are unbelievable. always putting themselves last and you know putting their children, putting their family first. आपने कभी उनसे because I remember मैं अपनी मम्मा से तो बहुत कभी-कभी ना टोकता भी था. हाँ, कि बहुत इतना क्यों कर- अरे भाई क्या लड़ाई होती थी, क्या लड़ाइयाँ होती थी. आई थिंक अभी जब मेरी शादी हो गई है ना, तो मेरी लड़ाई नहीं होती मेरी मॉम के साथ, अब कम हो गया. Okay. बट पहले तो बॉस, मतलब मैं हर चीज के लिए अपने माँ को ब्लेम करता था. कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी में, मम्मा योर फॉल्ट, आपने ऐसा बोला, आपने बोला. बिकॉज वी आर सो अलाइक ना, तो वी क्लैश ऑल्सो अलॉट समटाइम्स. वी आर वेरी अलाइक एज पीपल ऑल्सो. But did you ever see her doing things to a level जहाँ पर आपको लगा कि मुझे थोड़ा समझाना भी पड़ेगा मम्मा को? बहुत बार कि उनको ब्रोंकाइटिस होता था, बट वो साइड पे चली जाती थी घर बनाने के लिए, ये करने के लिए. वो खुद इतनी बीमार है, बट जो कोई और बीमार पड़ा है उनकी मदद करने चली जाती थी. पर अब जाके जब मैं बड़ा हुआ हूँ तो मुझे समझ आता है, क्योंकि मैं खुद थोड़े उनके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो मुझ में भी है. Give an example. यार, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग वी आर हियर फॉर, करेक्ट. हमें किसी को नहीं पता कि हाउ लॉन्ग वी आर ऑन दिस प्लेनेट फॉर, कभी भी कुछ हो सकता है. तो अगर आप यहाँ पे हो और आप एक अच्छे पोजीशन में हो और आपकी हेल्थ ठीक है और आप लोगों की मदद कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए. आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बुरे सिचुएशंस में हैं, जो ऐसे सिचुएशंस में है कभी कभी कि वो बोल नहीं पाते. और बहुत सारे लोग होते हैं जो ओपन अप नहीं कर पाते अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, कि यार ये मेरे साथ हो रहा है. इवन समथिंग स्मॉल है, यार मेरे को बुखार है, मुझे दवाई की जरूरत है, कभी बोल नहीं पाएंगे वो. दे विल गेट स्कैर्ड टू टेल यू. I mean, sounds like again. एंड आई डोंट नो व्हाई, बट लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होता है मदद मांगने में. और जब कोई मदद मांगता है तो वो बहुत बार मजबूरी में मांग रहा है, उस पर खुद बहुत कुछ गुजर रहा है मदद मांगने में. सो आई एम नॉट सेइंग हेल्प एवरीवन, see the situation, see your own situation and help, but it's the only way we can progress as a civilization, as humans. That's the only way. There's no other way. Honestly, there's no other way. So it sounds like your mother is such a wonderful person. मैं No, she is. obviously इतने, उनका नाम भी करुणा है. I mean, like really, it's crazy कि that she is
लिटरली हर नेम। तो बट मुझे आपने एक चीज बताई थी जब हम लोग पहले मिले थे, आपने कहा था कि शी इज ऑल्सो द पर्सन हु इज एक्चुअली द फनीयर पर्सन इन द हाउस। I believe so. जिनकी- She has very good sense of humor. She has very offensive sense of humor also. But I think वो एक generational चीज है. ऑफेंसिव बाय मतलब पहले एक चीज, बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, 90s में एक ऐसा जमाना था जब कोई मोटा होता था तो हम बोल देते मोटे, ए टकले, ये ऐसे जोक्स होते। एक काला कुत्ता होता था उसको ब्लैकी बुलाते थे। आई मीन दीज वर द नेम्स, लिटरली ऐसा था। हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे प्लस साइज है ये या वो है। सो बट आई थिंक वो एक लाइक माय फादर, मैं अभी भी पिक्चर कर रहा हूँ उनके साथ, तो ही लव्स डूइंग फैट जोक्स एंड आई टेल हिम दैट पापा अभी 2026 में लोगों को कैंसिल कर देते। कैंसिल इसलिए मैं खुद मोटा हूँ तो मुझे तो राइट है ना मोटे जोक्स डालने मेरे खुद के पिक्चर में। लाइक मैं ऑफेंड नहीं होता ना, मुझे रोज आके तुम लोग बोलते हो कि मैं मोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, तब तुम लोग कैंसिल नहीं होते हो घर पे। तो हेल्थ के लिए बोलते होंगे आप शायद। अभी जो भी रीजन हो, बट बोलते तो है ना आप मोटे हो गए हो, मत खाओ। तो इज लाइक आई विल कीप अ फैट जोक फॉर श्योर। ओके, इट साउंड्स लाइक अ वेरी पंजाबी फैमिली। नो, इट इज अ वेरी पंजाबी, क्योंकि पंजाबी ह्यूमर अंदर हम लोग बिल्कुल ही काफी अनफिल्टर्ड होता है। मैं भी पंजाबी फैमिली। अच्छा, आप भी हो? हाँ, तो मुझे भी घर पे देखा हुआ है मैंने काफी, और मैं भी बहुत बारी समझा चुका हूँ कि देखो ये सब नहीं बोल सकते, वी कांट से थिंग्स लाइक दिस। नहीं, बट आई अंडरस्टैंड इट्स अ जनरेशनल थिंग है कि जब वो लोग बड़े होते तो वैसा था कल्चर। अभी जब थोड़े टाइम के बाद हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो हमें भी बोलेंगे कि आप लोग ऐसे मत बोलो, ये मत बोलो। आई डोंट गेट इट फ्रैंकली। इफ देयर इज नो मैलिस बिहाइंड व्हाट यू आर सेइंग, आई थिंक इट्स ओके। आपने उनमें से उनका कोई ह्यूमर, सम पार्ट ऑफ ह्यूमर आपके अंदर आया है? मम्मी का हाँ आया है, सेइंग द रॉन्ग थिंग एट द रॉन्ग टाइम। आई थिंक वो एक चीज है। Like someone tells me, oh, I like this girl, and when that girl and that guy together, they likes you. Okay. Maybe you'll take things ahead. And that's not a. Then you'll realize the girl is married, so then maybe you should have not said it. So things like that. Got it. Makes sense. So that's what you've got from your mom. अब मुझे बताओ पापा से आपने क्या inherit किया है? पापा से जायदाद। यार इसको अभी तुम लोग काट के कुछ सीरियस मत बना देता। इट्स अ जोक, इट्स माय सेंस ऑफ ह्यूमर। We also have a laugh track in the background now today, so that laugh track is going to be there. पापा से बहुत पंक्चुअलिटी, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम, ही इज ऑलवेज ऑल्सो वो जो हाइपर है वर्क को, काम को लेके, वो सुबह के 7 बजे से लोगों को फोन करना शुरू कर देगा, मेरा गाना क्यों नहीं आया, मेरा ये क्यों नहीं आया, मेरा ये वो क्यों नहीं आया। बहुत सारी जो यंगर जनरेशन वो लोग डर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अजीम, हु इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड ऑल ऑफ अस वी वर्क विद हिम, समटाइम्स ही हेल्प मी आउट एंड डन म्यूजिक इन वन ऑफ माय डैड्स फिल्म्स। सो माय डैड स्टार्ट्स कॉलिंग 7-8 बजे 9 बजे, और अजीम उठता ही है आई थिंक 2 बजे। तो वो बहुत डर जाता है कि मुझे सुबह में क्यों। तो मैं भी बोलता हूँ भाई सुबह लोग काम करते हैं। He's not understood that funda is yet. Interesting. तो पापा, I mean, I would love to know कि डेविड सर घर पे as a father, how was he? जब भी मुझे फीवर होता था तो then he would be very worried. I remember that very well. And he always wants the family together. And उनके 2-3 चीजें which he loves: cricket, films, watches, cars, sports. तो around that only conversation happens. And I think only अभी जाके now that he's crossed 70, he's opening up about his feelings and talking to us. Oh wow. पर उसके पहले वो बात भी नहीं करते थे, never. And you'd think it's a waste of time. बोलते काम करो आगे बढ़ो, काम करो आगे बढ़ो. There's no time for that, and I understand where he's coming from. मुझे समझ में आता है क्योंकि feelings are also something, you know, Nikhil. I understand you believe in that you should open up and you should share, but कभी-कभी इंसान लूप में चले जाता है इसके साथ. You can even become a victim by oversharing कि यार मेरे साथ ये हुआ आज, मेरे साथ ये। बहुत लोगों को वो उसमें चले जाते हैं कि रोज फीलिंग्स के बारे में बात करके हम लोग हल्के हो जाते हैं, बट यू ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग सॉरी अबाउट योरसेल्फ। सो एक बैलेंस होना पड़ता है। बिल्कुल। एंड आई फील यू हैव टू फाइंड दोस 3-4 ऐसे लोग जिसके साथ आप ओपन कर सकते हो। लाइक ऑब्वियसली मैं अपने वाइफ को बोल सकता हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है अमन या अंकित, मैं उसको बोल सकता हूँ, या मैं जो for example I can even talk to my dog or my mom. So they already 5-6 लोग हैं। मैं ना आपके जितने भी आपने पॉडकास्ट किए ना, एक जो बात आपने दोहराई है दोनों जगहों पर, वो यही है कि लोग पॉडकास्ट पे जाकर ना बहुत दिल की बातें करते हैं। दे टॉक अबाउट कि मेरे हाउ हार्ड माई लाइफ वाज, मुझे सिर्फ खुशी की बातें करनी है। Then it just becomes about
you know, it goes down. I'm not saying हुआ होगा and then you want to say a truth. Yeah. But I also don't want to talk about those things. Yeah. But मुझे फिर कभी-कभी लगता है कि लोगों को पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ है. मतलब ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ है, but हुआ हो सकता है. But मैं ना, I'm also coming to that point कि मुझे जो लग रहा है, and again, you know, this is also a very typical male thing to kind of feel. Yeah. कि यार मुझे जब पहली बार जिंदगी में ना, देखो मैं 31 तक मैं भी exactly, I'm 1 year older than you. Yeah. 1 or 2 years. I'm 39 right now. You're 39? Yes. तो टिल अबाउट 30-31 मैं भी बिल्कुल ऐसा था. मेरे को भी ये था कि मैं अपनी फीलिंग्स कहीं जाके बताऊंगा नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु एक्सप्रेसेस. आई एम द पर्सन जो मस्ती करता है, एंजॉय करता है जिंदगी को, अपने काम को काम पे रखता है, घर को घर पे रखता है, एंड एटसेट्रा. आई एम वेरी. एंड देन आई वाज डायग्नोज्ड विद क्लिनिकल एंजाइटी. और मुझे उस एंजाइटी एट द पीक ऑफ माय एंजाइटी, भाई एंजाइटी को जो भी शहर में रह रहा है आज के टाइम में, उसको एंजाइटी तो होएगा ही होएगा ना. हाउ कैन यू नॉट हैव एंजाइटी लिविंग इन सच अ फास्ट प्लेस्ड. Look at the speed of our life, boss. Correct. You're moving so fast. You want everything fast. तो anxiety तो होना ही है. But that's more to do because of our lifestyle. अगर आपका जो भी दिन हुआ, उसके बाद आप जा रहे थे और किधर बैठे थे और आपके पास एक green valley है, पानी है, और सिर्फ आपको तारे दिखाए ऊपर, आपको नहीं होगा anxiety. Because you get time to, everything is slowed down. Yeah. But when are we getting to slow down? Yeah. You'll go home, you'll have stress, you'll have tension, or you'll worry about your child. Yeah. Is your wife happy? Yeah. Are your parents happy? कल दूध वाला आ रहा है, उसको पैसे देने, क्या वो खुश है, क्या उसकी फैमिली खुश है? तो हम फिर वो चीजें भी हो रही है ना. नहीं बिल्कुल. आई थिंक मुझे जो थेरेपी में समझ आया, मैं थेरेपी लेनी शुरू की थी उसके बाद, एंड आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग दैट आई हैड इन थेरेपी वाज दैट कि एज मेन वी एक्चुअली डू दिस एज अ लिटरली एज अ स्पीशीज, जहाँ पर हम ना अपनी फीलिंग्स को ना बहुत कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं. मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा, एंड आई डोंट नो इफ दिस इज ऑफ एनी यूज टू यू, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट माय थेरेपिस्ट सेड, बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली कि मुझे क्यों एंजाइटी एंड यू नो व्हाई एम आई गोइंग थ्रू दिस, यू नो. एंड आफ्टर लाइक 3 months ऑफ बैक एंड फोर्थ शी इज लाइक, यू आर नॉट अ वेरी इमोशनल पर्सन. एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई वाज लाइक, मैं इमोशनल नहीं हूँ. मैं तो मतलब फेसबुक पे लंबे लंबे पोस्ट लिखता हूँ, मैं तो फिल्में देख के रोता हूँ. हाउ कैन यू से आई एम अ वेरी सेंसिटिव मैन? आई कंसिडर माई सेल्फ सेंसिटिव मैन. एंड देन शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन. शी सेड, जब आपकी वाइफ ना घर पे आती है आफ्टर अ हार्ड डे एट वर्क, व्हाट हैपेंस? I'm like, she expresses herself, I listen to her, then we maybe watch a movie, you know, cuddle, go to sleep. She says, okay, now when you have a hard day at work and you come, what happens then? I was like, I don't like to take my hard days and put them at home. I don't want to bring negativity into my home. She says, you and every man in India, you and every man in the world, सारे आदमी ऐसा करते हैं, क्योंकि सारे आदमियों को बोला गया है कि आपका ना पूरा बर्डन ना अपने अंदर रखना है, एक्सप्रेस नहीं करना है. इज अ पैटर्न दैट मैन हैव. इट इज नॉट सो टू स्पीक ओनली अबाउट द, इट्स नॉट योर चॉइस, इट इज इन मेनी वेज कंडीशनिंग. तो इसलिए इनफैक्ट ये शो भी हमने इसलिए शुरू किया कि जो जो चीज़ें शायद हम बात नहीं कर पाते, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑन दिस शो फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, टचवुड. बहुत सारे आदमी आके बहुत कुछ बोल कर गए हैं शो पर. दे हैव रियली जेन्युइनली ओपनड अप, एंड आई फील लाइक दिस स्पेस इज नेसेसरी. या फॉर मेन, आई एग्री विद यू. आई मीन वेरी ऑनेस्टली मुझे भी हुआ है. आई हैव आल्सो हैड I've also experienced a panic attack at some. I mean, जब हुआ था तो, see, the only problem is when I express everything then which was a problem might seem as funny now. So I don't know why my brain works like that, but I did have a panic attack. I have had, and I didn't know what it was at that point. But even I got seeked help. I spoke to a lot of people, but eventually what helped me was changing my lifestyle around totally. I had to just change my lifestyle around completely. I had to change it. It started with getting enough sunlight. I was not getting enough sunlight. I had to get more magnesium in the body. I did a lot of cold water and sauna therapy. Swimming helped me. Yoga helped me the most. These things helped me. And one of the other things that I realized which was not suiting, mine was a little bit more external, like something which was not suiting my body was coffee. For some reason, caffeine was throwing me off, and I was over abusing caffeine at that time, you know. And फिल्म वालों के बारे में एक चीज जो आई थिंक लोगों को पता नहीं है कि हम जो है ना, हमारा कोई 9 to 5 नहीं होता है. हमारा जब उठे तब से काम शुरू till I don't know 1 o'clock at night, 2 o'clock at night. There have been nights at 1 or 2 or 3
अमृत एंड मी हैव स्पोकन, यू नो, जब उनकी फिल्म रिलीज हो रही थी केसरी, आई रिमेंबर वो 2 या 3 बजे तक मतलब यू आर जस्ट वर्किंग. Yeah. आप ये नहीं होगा कि अभी मेरा काम खत्म हो गया, अभी बिल्कुल, ये होगा. यू आर 24/7 वायर्ड इनटू Yeah. दिस. द गेम इज रन दैट वे. Yeah. हाल ही में जब बॉर्डर रिलीज हो रही थी यार, बॉर्डर 2 वाज रिलीजिंग, हम लोग VFX के लिए राउंड द क्लॉक काम कर रहे थे. और 6 बजे सुबह में मैं, निधि दत्ता एंड भूषण कुमार, हम तीनों थे वहां पे. अनुराग एंड हिज टीम वर देयर कि प्रिंट दे दे. और इवेंचुअली जो प्रिंट गई वो भूषण जी ने उसके चेक किए बगैर भेज दी पहली प्रिंट, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं रहा था, वो रिलीज नहीं. आई जेन्युइनली एडमायर भूषण कुमार फॉर दिस. निधि एंड भूषण जी also as producers, and even the director, मतलब hats off to Anurag, the way he worked like a crazy person. अगर वो the reason I'm talking about Bhushan Kumar because he's already worth so much. उनका net worth already is, he doesn't need to do this. Absolutely, वो एक किसी को employ कर सकते हैं करने के लिए, but उन्होंने किया ये, और शायद इसीलिए ही इतने successful है वो. Sure, absolutely. तो जिन लोगों को लगता है कि यार ये बहुत ग्लैमरस लाइन है, यहाँ पे हम लोग सोते नहीं है. हम लोग ये सब सोचते रहते हैं कि हमारी फिल्म लोगों को पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी. तो काम का भी एक एंजाइटी होता है, बिल्कुल. काम की इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी, एंड दैट आई थिंक फ्यूल्ड माइन, आई थिंक अ लिटिल बिट, मे बी, आई थिंक So सो. I was going to ask you, अगर if you don't mind, कि आपको पता है कि did you understand कि panic attack क्यों आया? नो कब माइन, आया? हाँ, मेरा वाज पुश्ड बाय कॉफी, क्योंकि उस दिन मैंने कुछ खाया कम था एंड आई गॉट सो वायर्ड एंड आई कुडंट हैंडल द Wow. buzz and lack of sleep. Lack of sleep is a big reason apparently. How many hours you sleep? I try to sleep, but अब तो बेटी हुई है तो जितना मिल सकता है, but try to sleep about 6 to 7 hours. कोशिश, 8 घंटे तो नहीं होता होगा. मतलब 8 तो मुझे याद भी नहीं है. पहले 6 से 7 के बीच में. I think the first month when your daughter must have come, तब तो बहुत कम ही होगा. पहले 3 महीने तो Yeah, it's toughest. It is the toughest on the woman. of course it is. It is. Men course. are second, but you have to help as well during that time. You have to be there and do whatever because आप भी figure out कर रहे हो. I think that was exciting but tough also, क्योंकि आप भी figure out कर रहे हो आप क्या करें, क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है. So like, you know, you're like, what can I do? What can I do? And there is a lot to do though. Of course. There's a lot to do. Of course. And I think the best thing you can do is equip your wife with whatever she needs and just try and be there for her. Try and let her take as many, more than, you know, I think letting the wife take naps is forcing the wife to take a nap. Because वो, they don't, you know, even जब time भी होता है then they won't sleep. तो मैंने फिर I think पहले 1-2 हफ्ते में समझ आ जाता है. एक तो you start understanding things about postpartum, you start understanding कि बच्चे को physiologically मदर की जरूरत होती है, whether it's for breastfeeding, whether it is body to body touch, वो it helps the child in, you know, safe महसूस But होता है. But what we I'm did, saying if you remember like same delivery, but जब बच्चा like अभी पैदा हुआ है, पहले 1-2 दिन when you're in the hospital and the mother's supposed to rest because obviously she's been through a lot. So that's when I remember when I had my baby, when I had Lara, like I would hold her that time. और तब मेरे साथ वो बहुत, I would just like hold her and sit like, and मैं इतना conscious था तो मैं बहुत ऐसे बैठता था, like I didn't move like for couple of hours. But वो आपके साथ भी हुआ होगा. you know, तो because you don't पहले want to. exactly, तो पहले 2 दिन जो हॉस्पिटल में होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, जब you know your wife is recovering, उस टाइम तो ऐसे सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है एंजाइटी तभी होती है कि I should have to keep my baby alive. You cannot screw this up. You have to make sure that your child, your baby is fine. Yeah. इतने छोटे होते हैं, you don't realize actually कितनी छोटे होते हैं बच्चे. When they come out, it it's is madness. You think that मतलब your concept of babies. It's the closest to a miracle. Absolutely. I think it is a miracle. Honestly, it is a miracle. I know बहुत बच्चे हैं दुनिया में. Yeah. तो but that is the closest to how, I mean, I wish everyone can experience, every man should experience this once, you know, वो जिस तरीके से. और अभी तो अंदर ले जाते हैं OT के और they give you the, ah man, that was such a experience. क्योंकि जब लारा मुझे दी गई थी and I got her and I got her face right next to Natasha's face. Yeah. And I'm not joking, she smiled. That one minute old baby, क्या बात है. उसने मुस्कुराया. और and I got that photo, I have that photo as well. It was just, मैं बहुत worried था Natasha के लिए उस वक्त के, because you know my wife is like my, you know, it's a part of my heart. And besides being my wife, I'm saying वो छोड़ो, we've been friends before for so many years. So just like she's literally also a part of me that I love. I'm so protective about her.
you become protective, you know. Of course. And you're seeing seeing that person go through so much. I'm just so worried about her, about Natasha, that how will she do this? Yeah. How will she give birth? Yeah. Because वो बहुत नाजुक लड़की रही है उसके पहले, and she did it, and I realized she's way stronger than me that day, so I'm not gonna mess with her. भाई मैं बताऊं वरुण आपको, मेरे तो ऐसा हुआ था कि डेजी मेरी वाइफ, वो तो अच्छा, आपकी वाइफ का नाम डेजी है? डेजी है जी. That's why you have the flowers. I mean, yes, that is exactly why. Okay. 100%. The flowers are also because What's her surname? Raj Khowa. She's Assamese. Raj Khowa. Yes. That's a very cool Yeah. name. So जब वो उन्होंने birth दिया, and I'm constantly in awe of women क्योंकि she gave birth and उसके बाद she's talking to the doctor, वो अच्छा, उसी वक्त. Yeah, she's talking and she's smiling. She's like, how's my baby? Is she okay? Is everything okay? So she was just super happy about that. And मैं हूँ जिसके रोने नहीं रुक रहे. Yeah, obviously. And I am just crying and crying and crying. At some point, the doctor वो रोक कर बोलता है कि कोई इसके लिए टिश्यू ले आओ. Somebody take care of Nikhil. Yeah. Nikhil, do you need tissues? Do you need to sit down? And I was like, no, doctor, please go ahead and do your work. Crazy. But I was just like, yeah, this is, as you said, miracle. I saw my daughter come out and of my wife. What a like. Unbelievable. जब पहली बार आप देखते हो कि it's a real human being and it's come from both of you and it's alive and it's crying and एक ethereal feeling होती है. मुझे तो लगता है कि unreal. So I was when I first touched her, when I got her in my arms, मैं तो I think 1 घंटा तो मैं I've sobbed. Really, I just couldn't stop. Yeah, sobbing, बहुत moving. I think even when I saw my niece for the first time. Yeah. Niara, वो भी मेरे लिए बहुत emotional moment था as well. It's insane. Now I want to talk a little bit more about being a girl dad because both of us are. Yeah. But I'll come a little bit again back to this conversation. We were talking about your father and I was very curious again to know क्योंकि आपने बोला है कि वो एक्सप्रेस भी नहीं करते थे उस समय ज़्यादा. अब उन्होंने एक्सप्रेस करना शुरू किया है. How did that shape being a man for you? Might sound weird, but मैंने मर्द बनना सीखा है मेरे माँ से. Okay. ना ही मेरे डैड से या ब्रदर से. Okay. बट मेरे माँ से, क्योंकि उनके आंखों से जब देखा कि what is an ideal मर्द. And my mother is a very understanding person. She knows कि दुनिया में सब black and white नहीं होता है. There is grey. वो जब जज करती है लोगों को तो वो सीधा जज नहीं करते. वो अंडरस्टैंड करती कि यार इस इंसान के साथ कुछ हुआ होगा इसीलिए ये इंसान ऐसा है. Sometimes being diplomatic and compromising in a situation is not the worst thing because every person is not equal. तो आपका नजरिया क्या है? तो ये दुनिया को जिस नजर से देखना है वो मेरे माँ के थ्रू मैंने सीखा. तो I feel even what an expectation from an ideal man is, it's not all muscle and brawn and be like, मैं ये करूँगा वो होगा. But definitely standing up for the right thing I learned from my mother. Wow. No, I mean... See, from my father, I've learned how to save, definitely, because वो जिस time पे बने director और ये सब, it was not an easy time, and just being a director, he never became a producer. उन्होंने बहुत पैसे save किए. He created his own world. From where he came to what height he's reached is unbelievable. He's one of the only directors who has the highest success rate in the Hindi film industry. Wow. People don't have that success rate, what David Dhawan has. So I've learned success. I've learned how a person is supposed to, be relevant over time. मतलब उन्होंने कब शुरू किया था? My next film is है जवानी तो इश्क होना is his film. I know. The director that I have worked the most in my career is also my father. How sweet. The director that Govinda sir, maybe Salman Bhai, Anil Kapoor, all these directors, Sanjay Dutt, the highest amount of times I've worked with the director is David Dhawan. Wow. And including me, who's a much younger talent. Fathers का उस समय तो यही होता था कि आपको option नहीं होता था. You had to really work for your family. You had to make sure. Yeah, he was. That's what he was doing. And मुझे भी मेरी mother ने ही almost, हम भी 2 भाई हैं, तो मेरी mother ने ही हमको almost single-handedly raise किया था. And so everything I've learned about empathy, about being a good human being, empathy. It's come from my mother. Yeah, I think today the world needs a lot of empathy. Today the thing that we need around the world is empathy. There's no other way. अगर जो just in a situation जो है जो एक deadlock you will reach. If you have to have empathy. I agree. That is something I struggled with a lot. कि मेरे घर पे ना मम्मा तो बहुत I love you बोलती थी.
पापा से कभी बोला नहीं जाता था. यू नो मम्मा तो बहुत झपियाँ देती थी, पापा से कभी दी नहीं जाती थी. यू नो एंड अगेन इट वाज लाइक जो आप सीख रहे हो अबाउट हु यू शुड बी एक्टिवली मदर से आ रहा है. बट आप पापा को भी देख रहे हो, ही इज बीइंग अ लिटिल बिट मोर स्टॉइक. रनिंग जो यही होता था, पापा से आप पूछो कि मैं कौन सी क्लास में हूं, उनको नहीं पता होता था कि अच्छा he'll be like 5th में. मैंने कहा पापा मैं 3rd में हूं. you know, yeah, when he says 3rd, I'm like मैं कॉलेज में पहुंच गया, क्या बात कर रहे हो पापा आप. So this used to be the thing that you know your father would always be someone who's just so engrossed in working. And also again उनकी चॉइस नहीं होती थी, आप अभी समझते हो. बट बड़े होते हुए मेरे को भी मेरे पापा के अगेंस्ट मतलब आई हैड अ लॉट ऑफ एंग्स्ट. क्यों नहीं आसपास है, क्यों नहीं मेरे साथ खेलते, क्यों नहीं मैं दैट एक इमेज आई हैव ऑफ अ परफेक्ट फैमिली वो क्यों नहीं आ. नो मुझे ये कभी लैक ऑफ नॉट दैट ही वाज ओवर लाइक आई लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, मेरे को चाहिए ही नहीं था. ये क्या होता है? बट मेरा यही था कि तुम क्या बोलोगे मुझे तो पता ही कि मैं लव्ड हूँ. I don't know, I didn't need it. I don't know why I didn't need it. I don't know why I didn't need it. I never felt it. I just felt a lot of love, I think, from मेरे दोस्तों से, from actually मुझे बहुत प्यार लोगों से मिला है बचपन. You know how they say like अभी you're a public figure तो the audience loves you. मुझे उस वक्त से whether I'm 2, 3, 4, whatever, उसी वक्त से whether it's the teachers, whether it's my friends, whether it's the female attention I got या उनके पेरेंट्स से या हर स्ट्रेंजर्स से आई वाज जस्ट लुक्ड. और मे बी मैंने उस तरीके से देखा कि सब मुझे अलग तरीके से देख रहे हैं. बट आई फेल्ट इट. आई नो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज माइंडसेट. इट्स नॉट द वो जो अलग माइंडसेट होता है ना कि वो नहीं मिला. एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल, आई हैव वेरी क्लोज फ्रेंड्स, आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड जिसको बचपन से ऐसे मिला है. और मैं उसको हमेशा बोलता था कि मैं तुझे इतना प्यार दे रहा हूँ साले, तेरे को बिठा रहा हूँ, ऑमलेट खिला रहा हूँ, खुश रहना उसमें, तो क्यों मम्मी पापा के प्यार के पीछे पड़ा है. नहीं सेम थोड़ी होता है. तो सेम नहीं है बट मैं दे रहा हूँ ना, मुझे पता है मैं कौन हूँ. तो फिर कौन है तू भी तो 3rd स्टैंडर्ड में. तो I was a very, I would say overconfident. Yeah. Actually, I don't think it was overconfident. I think उतना confidence ही देना है लोगों को कि सही हुआ तो ठीक है, नहीं सही हुआ तो भी ठीक है. I love this. क्या उखाड़ लेगा कोई. One last question on this thread, क्योंकि मुझे again curiosity भी है. क्या आपके पापा ने, डेविड सर ने आपको कभी आई एम प्राउड ऑफ यू अभी तक बोला है? हाँ, बहुत बार. वो बाहर बोलते हैं बहुत लोगों को, मुझे मुंह पे नहीं बोलते, पर मुझे बोला है आफ्टर सर्टेन थिंग्स लाइक आफ्टर बदलापुर बोला था मुझे एक बार. मैं तेरा हीरो के वक्त बोला था सीन्स के बाद में. डू यू रिमेंबर लाइक द फर्स्ट मोमेंट योर फादर सेड समथिंग इमोशनल टू यू, समथिंग? हाँ, सी आई थिंक इफ आई गो बैक 4th स्टैंडर्ड में एक शील्ड होता था, यू हैड टू विन इन स्पोर्ट्स डे. और मेरा हमेशा से था कि ये अगर मैं जीतूं तो इनको बोलना ही पड़ेगा. नहीं, मुझे उल्टा भी बोलते थे कि द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली एंड ऑल, ये सभी बोला गया है. हाँ, बिकॉज आई वाज वेरी नॉटी, आई वाज अ नॉटी किड. बट मुझे लगा था यार मैं शील्ड जीत लूंगा ना 4th स्टैंडर्ड में तो ये लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे मुझे. एटलीस्ट वो 2-3 साल के लिए चुप हो जाएंगे. एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड मयूर देसाई कि यार ये जीतना जरूरी है घर पे दिखाने के लिए लोगों को, वरना मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे लोग. You have to earn respect, bro. You have to earn respect. 4th स्टैंडर्ड में आपको रिस्पेक्ट क्यों चाहिए थी? मतलब यार अब घर पे खा रहे हो, टपली वपली नहीं पड़ना चाहिए, भाई भी बोलेगा कुछ ना कुछ, तो यू नीड टू अर्न रिस्पेक्ट इन योर हाउस ऑल्सो. यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट. जितने भी बच्चे, अगर बच्चे देखते हैं आपका शो, छोटे अगर बच्चे देख रहे हैं शो, तो यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स. कुछ करके कुछ दिखाना पड़ेगा मम्मी पापा को, देखो ये मैंने भी किया है, तो मेरे को हल्के में मत लो तुम लोग. मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा, और आगे जाके मैं शायद बहुत बड़ा बन जाऊँ, तो अभी ट्रीटमेंट थोड़ा सा अच्छा रखो. तो No, you have, because parents are also human beings only ना. बिल्कुल. उनको क्या पता, वो लोग भी पेरेंटिंग पहली बार कर रहे हैं ना, या दूसरी बार. वो लोग थोड़ी ना कुछ 100 बच्चों को बड़ा किया उन्होंने, उनको थोड़ी ना पता है कुछ. Every parent is learning on the job. Same. So they all make mistakes. Every parent has dropped a child by mistake. Okay. गिराया होगा ना बचपन में या लगा होगा. Be careful. So my point is you have to earn that respect, so they also know कि shit this person इसका भी है. You know, everything that you are describing about your childhood, मुझे ना एक्चुअली लग रहा है कि आपकी चाइल्डहुड ही एक डेविड धवन गोविंदा फिल्म थी. मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, मेरे मार्क्स जो होते थे बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज होते थे. 55, 60, 50 ऐसे होते थे. और सीधा 10th में 82, 86. Okay. 86% 10th में. Okay.
मुझे पहले से ही पता था ये मिडिल के ओवर्स में मार के कोई फायदा नहीं है, मारना है तो वो 10th में ही मारता हो ICSE में। उस टाइम तक इन लोगों को टाइम पास करने दो, बोलने दो जो बोलना है, स्टूडेंट अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो वो क्या फायदा। एडमिशन तो 10th पे ही होता है ना, बिल्कुल थोड़ी ना आपके 5th स्टैंडर्ड के मार्क्स देखते हैं लोग। तो मैं तभी पढ़ा, मैंने बोला तब दिखाता हूँ, बिल्कुल तो मैंने पढ़ा, फिर 10th में पढ़ा मैं। fair enough. देन क्या हुआ, देन दे हैड टू गिव मी रिस्पेक्ट, दे कुडंट से एनीथिंग। Now तो अभी in any case अभी तो बिकॉज मेरे भाई ने 10th में इतना अच्छा नहीं किया था, तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं थी, उसका थोड़ा सा ऐसा ऐसा किया। तो मेरे को जब मुझे 10th में मार्क्स मिले, सॉरी भैया, बट मुझे 10th में मार्क्स जब मिले एंड आई वेंट टू HR कॉलेज, पहले वो होता था ना, we'll call this college and we'll get you in and this and that. So this the Ambani school had started and my father refused to call anyone to get me in. And there were a lot of other friends, like Riya got in, Anil Kapoor's daughter. Riya was genuinely smart. She was very smart, in studies and all that stuff. And she would read a lot. yeah. तो मैं नहीं था उस सब में. I take things personally. So मुझे लग गया था. तो मैंने बोला 10th में now I'll make sure I'm not going to ask this man to call anyone. Okay. So 10th I got the marks, went to HR, got walk-in admission, and my mother said, I'm so proud of you. And I went and kept my mark sheet near my father and I told him, didn't need your help. So I would take, me and my father had that little competition we've had. Now it's not there. Now I'm also a father. I understand now where he's coming from. But I was immature then. So at that time I would take it as competitiveness. बट क्या आपको समझ आया, आप जो बोल रहे हैं अभी नाउ यूर अ फादर? यही कि इन्होंने फोन नहीं किया किसी को तो मेरी एडमिशन हुई नहीं। यही समझ आया, जब कर सकते थे तो नहीं किया उन्होंने फोन। अरे ऐसे बट अभी ये समझ आया कि मुझे सिखाने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। बट वो तो मुझे पता था, इफ आई वर्क हार्ड आई विल गेट इन, वो हो गया ना फिर। आई सी हिज मेथड ऑफ टीचिंग मी, आई गेट इट, यू सीन दैट फिल्म वक्त? हाँ अमिताभ बच्चन, उसका एक खिलौनों का एक दुकान है, वो अक्षय कुमार काम नहीं करता रहता है एंड ऑल, सो ही पुट्स हिम इन वन अदर हाउस एंड ऑल, वो बहुत ड्रामेटिक है। करेक्ट एंड देन ही वर्क्स हार्ड एंड मुझे वो, आई हैड क्राइड अ लॉट व्हेन आई सॉ दैट फिल्म बिकॉज़ आई रिलेटेड विद So you know what probably would happen to someone after he's older? My thing was in the 6th 7th standard I felt कि ये लोग मेरे को सपोर्ट करने नहीं वाले, ये मम्मी पापा। So मैं बहुत पर्सनली ले लिया था, मैंने बोला मुझे इनका सपोर्ट चाहिए नहीं, मुझे जो करना है, आई वुड टेल माय फ्रेंड आल्सो एट दैट टाइम, मयूद, सेम फ्रेंड मयूद, और से ये लोग कुछ ज्यादा सपोर्ट कर रहे नहीं है घर पे, तो कुछ करना तो पड़ेगा भाई, बिकॉज मुझे एक्टर तो बनना था, कुछ एंटरटेनमेंट में बनना था, बट बिसाइड्स माय फादर एवरीवन एल्स टोल्ड मी दैट यू शुड बी एन एक्टर, एंड माय मदर मेनी टाइम्स टोल्ड मी ही विल नेवर लॉन्च यू. Okay. He has never launched anyone. Correct. In his life. He has never launched any hero's son. He will never launch you. He will only work with you if he feels you're a star. Wow. This was drilled into my Now head. it is making sense. I don't know how people see it or whatever way they see it, they can see it in today. There's no point of me saying anything only because I am from a privileged background. There's no doubt about that. And it's helped me immensely. But psychologically, I took it like I'm not. And I worked accordingly. I had enrolled into various classes. I had enrolled into acting. In fact, my plan was something else. My plan was that मैं तो debut Hollywood में करना चाहिए मुझे, पापा को दिखाने के लिए. कि स्पीलबर्ग ने लॉन्च कर दिया तो पापा को लगेगा कुछ कि देखा. So I had thought like that. So you're right. Maybe it is like a David Dhawan movie. In that sense, yeah, maybe it is. मैं तो ये पूछने वाला था कि कौन सी डेविड धवन पिक्चर है? No, मेरे दो प्लान थे. Either Spielberg should launch me or Anurag Kashyap should launch me. Either. That is quite a नहीं, झटका पापा को झटका ये दो ही चीजों से लग सकता है. तो I had chosen these two parts. I would have loved to see you in a Amala Anurag, of course. But that also shocked him also. That also Karan Johar launching me also shocked him ना. मेरा वो देखा मोमेंट फिर भी हुआ ना. देखा नहीं यार बोल. मुझे भी दूल्हे राजा की याद आ रही है बिटवीन गोविंद एंड कादर खान. No. वो सब चल रहा है. ए सेठ जी. ए सेठ जी. जो आपने मुझे उस दिन कहा भी था कि आपके दिमाग में सिटकॉम ही चल रहा है. एंड देन यू आल्सो टोल्ड मी अ स्टोरी व्हिच नहीं, अभी सीरियस हो गया है, अभी सीरियस भी करता हूँ. हाँ, no, but I'm अभी saying, सीरियस फिल्म भी चलती है कभी कभी. अच्छी चलनी भी चाहिए. Yeah. You're a father now. No, but you said you also told me a story. It was a very serious thing that had happened in your life कि पापा को अंडरवर्ल्ड के थ्रेट आए थे. Yeah. And आपके
घर पे एक स्टाफ की वजह से सिटकॉम ही चल रहा था. तो So staff tell me का from the beginning, मतलब क्या हुआ? People were getting calls and all at that time. तो हमें भी आ रहे थे घर पे, बट हमें काफी टाइम से आ रहे थे, बट किसी को पता नहीं चला क्योंकि स्टाफ झगड़ा कर रहा था जिसने भी फोन किया था उससे, और स्टाफ ने पूरा एड्रेस बता दिया था जहाँ मिलना है, वो इंसान को बता दिया कि तू इधर मिल, ये गार्डन में मिल, हम तुमको पेलेंगे, ये सब बता दिया था. तो इवेंचुअली जब ये बहुत बड़ा हो गया था, And this was the underworld on the other side. तो जब ये बहुत बड़ा हो गया था, there was a actor, I don't know name the actor, he called my dad and he said कि यार this has gotten out of hand and this person is saying that they are going to come home at this time and you know with guns and whatever and they know your address, they know that outside your building there are bamboos put. Saying बोला किसने? And then he named the staff's name. So we had to stay outside the house then for that one day and all that stuff. So I mean it is funny in that sense, but it's not funny because It is it's of course dangerous. not funny. Of course it is serious, but the way that I think Yeah. नहीं, मुझे तो एक जो चीज़ पे अभी आना है, क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत ही स्वीट लगती हैं आपके जितने भी जॉइंट इंटरव्यूज होते हैं आपकी फीमेल को स्टार्स के साथ, एक बहुत ही कंफर्टेबल वाइब हमेशा दिखती है. दे ऑलवेज हैव दिस ऑल द स्वीट थिंग्स टू से अबाउट यू. हाउ डिड यू गेट कंफर्टेबल विद वुमेन इन योर लाइफ? I don't know. I think by जो बातें, by being very honest, treating them emotionally the same way like I would treat my male friends, you know. Okay. तो मेरी दोस्त भी बहुत रही, मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही है. You know, I've had a lot of great friends from the opposite sex. I think I could open up more to them, honestly. हमेशा से I could have opened up more, and my best friends, my wife Natasha was my best friend earlier. So for hours and hours and hours we would talk on the phone, and even other girls who were very close friends of mine, I could always open up, talk to them, they talk to me, and sometimes, you know, just being a friend without any ulterior motive, it is an amazing feeling as well. बिल्कुल. And I think even girls see that as a very good thing as well, you know, and it has to be done with a very pure heart. And I think those are some amazing friendships I've enjoyed, and I still do. So that's how I get along so well with my female co-stars as well, by just being friends, honestly. Yeah. You know, and sometimes they have issues on sets which they can't express and they can't take care of, and I think it's my duty as a co-star to stand up for them or be there for them, you know. जैसे मतलब everyone has a different issue. कभी कभी other अलग चीजें होती है, टाइमिंग की इश्यूज होती है, कभी कभी कपड़ों की इश्यूज होती है, some scenes are there, कभी they are not comfortable with, they want to do it in that time, and you have to understand their point of view of why they see it in that way, and you know, and don't leave them hanging कि वो अकेले जाके डायरेक्टर को बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है. If you go with them, then you know, two people going with them, obviously the voice is stronger. That's really incredible. That's amazing. काफी लड़के तो स्ट्रगल करते हैं at that point of time कि healthy friendships कैसे फॉर्म करें. हेल्दी फ्रेंडशिप नहीं, आई थिंक वो स्ट्रगल करते हैं अनहेल्दी फ्रेंडशिप्स कैसे फॉर्म करें. हेल्दी फ्रेंडशिप्स के लिए आई थिंक मोस्ट गर्ल्स विल बी मोर देन हैप्पी टू बी इन अ स्पेस ऑफ अ वेरी हेल्दी सेफ फ्रेंडशिप. इट्स द मेन हु ट्विस्ट इट समटाइम्स. अगर आप एक हेल्दी फ्रेंडशिप करना चाहते हो, आई एम होपिंग मोस्ट लड़कियां वुड बी ओपन टू दैट. एक तरीका है, आप एक लड़की से बात करो, आप ये सब नहीं कर सकते हो. So there's a different way you will be with your male best friend, and you'll be different way you will be with your female best friend, you know. But जो सच्चाई आप मेल बेस्ट फ्रेंड को बोलते हो, आप वो सच्चाई फीमेल बेस्ट फ्रेंड को भी बोल सकते हो, आई फील. Do you think that ऐसा कुछ था उस समय जो आपको लगता है कि एक मिसकंसेप्शन होती है लड़कों लड़कियों के बारे में कि आई विश हमको ये सिखाया गया होता है, हमको ये बताया गया होता? All I know is that respect. Yeah. अगर आप रिस्पेक्ट सीख लो, not only towards women, towards even men, towards any human being, you just learn respect and space. हर इंसान का एक स्पेस और एक दायरा होता है. Interesting. तो विद इन दैट फ्रेमवर्क आप वो इंसान के साथ कम्युनिकेट करोगे तो वो समझ जाएगा. अभी कोई बहुत ही एड़ा हो तो वो अलग बात है, बट आई एम सेइंग मोस्ट पीपल, 99% पीपल हैव अ लाइन एंड देयर इज देयर रिस्पेक्ट. नाउ दिस रिस्पेक्ट कैन बी डिफरेंट फॉर ईच पर्सन. बिल्कुल. You know, so you have to understand what the respect for that girl is. You know, there might be certain areas that you don't cross. Now, what is that respect? Whether, and I've learned that also by being mean to certain people. You know, I'm being very honest by being mean to certain girls, which I've apologized for later on because उस वक्त पे मेरे में वो बुद्धि नहीं थी समझने के लिए. I don't know, वो ये बोला और मुझे समझ में पता है कब आया, जब when those girls gave it back to me. जब पलट के उन्होंने मुझे जवाब दिया ना बचपन में, मेरा मजाक उड़ाया उल्टा, तब मेरे दिमाग में खोपड़ी में गया कि यार ये गलत बात है.
So you have to understand a girl's space. Yeah. And if she doesn't want to, you have to understand consent also. Absolutely. I think the main thing what we have to make people understand is consent. There's nothing bigger than consent in this world. Man, woman, animal, anything. Consent. Agreed. बिल्कुल. You've said multiple times आपके best friend है. हाँ, बहुत है. अमन और अंकित आपने दो लोग बोले हैं. But do you feel like you had अपने दोस्तों के पास जो दोस्तों के साथ आपके space थी to kind of be entirely yourself? Yeah, fully. With these two friends, तो fully. 150% fully. I think the kind of friendship we shared throughout years was very open. We're still thick as friends. Any film releases of mine, they'll be there. I see. You know, any problem happens, they'll be there. When Lara was born, Aman and one other friend of mine, Kavish, they were there with me in the waiting room. Even recently, any hospitalization, anything serious, whether it's them, whether it's me, we're always there for each other. That's how it should be. I love it. तो आपने क्या सीखा अपने ना लड़के दोस्तों से, मेल फ्रेंडशिप से? कुछ भी झगड़ा हो गया, कुछ भी लफड़ा हो गया, कुछ भी मेरे लाइन का हो गया, कुछ भी I'll speak to them only about how to deal with it. कुछ भी हो गया, हमारे लाइन में कितना होता है ना ये ट्रोलिंग, ये सब होता है. तो when I speak to my friends, I get a very good perspective about it. I get I think any type of negativity you face around your work, which keeps happening up and down in today's day and age, Border के पहले भी थोड़ा वो जो भी हुआ था. So I spoke to one of my friends about it, Aman only I spoke to. He's like, so what? He's like, some of them are so funny. He said, and he started sending me then. And I also started seeing it in that point of view then and laughing on it because it actually doesn't mean anything. It doesn't go anywhere. It's nothing serious. He's like, Varun, if you did something, I would be the first one to tell you that this is just time pass. And if you can make fun of people, people can make fun of you. Just take it that way and screw it, man. That's really How does it matter? That's beautiful. And that gave me a good perspective about it. Even whenever my films have flopped, like when Kalank flopped also, these two friends, we went out and they made fun of me. They made fun of the VFX. So I think you sometimes have to see things from the other point of view. It's not so serious. Because even like I'm a guy who's done only comedies. Now when I'm getting into Border, I can see from that point of view why are people having a little bit of, not accepting me straight away. Because I've done only funny stuff. I've done only Boy Next Door stuff mostly. I've done Badlapur. So I'm capable. But I'm capable. Yeah, but what is their core memory? Abhi Sunny Sanskari ki hai. Bilkul. Oh, that's my versatility. Whether they want to see it or no, but they remember this. That's really, again, बहुत ही emotionally mature चीज़ है कि आपके दोस्त. But I learned that from my friends. That's beautiful. I learned that from my friends. I don't think any film person can give me that perspective. Why? They couldn't. Film people, we are like so much into ourselves. Like, अरे यार ये तुम्हारा image, तुम्हारा ये फलाना ढिंकाना, सब अपने आप किसी को कुछ आता तो है नहीं पहली बार. But everyone is taking themselves so seriously. You don't take yourself, so you laugh on it. Like even I remember Salman Bhai spoke to me about stuff. Laugh on yourself. Laugh on yourself. Don't take yourself so seriously. Enjoy it. Enjoy the journey. No, absolutely. And for what it's worth, आपकी स्माइल इतनी अच्छी है यार. नहीं मेरी तो बहुत मुझे तो पता है अच्छी है. मुझे प्रॉब्लम नहीं है खुद के स्माइल है. So I think that even Karan told me because that was a thing we did in Badri. Shashank had written it as that. I remember the opening. But my point is अगर है भी ऐसे तो भी ठीक है ना. कर लो time pass. मतलब that it doesn't. It's not a bad thing to be made. Sure. If that is the worst that they can point out to me, then that's fine. Which was the funniest thing that you saw? Funniest thing I found was one of a biscuit. I found the biscuit one really funny. It's a biscuit with a teda smile. I loved that one. I said, shit, I need to get a biscuit ad and I'd use it. Very cute. Fully. ठीक है. No, I mean, I'm just so happy to hear कि आपने इतने healthy तरीके से लिया. Like I also think that कि कभी-कभी बहुत unfounded भी होती हैं, बहुत cruel भी होती हैं सारी बातें. It can get for some people. Like I've seen, the way that Arjun is kind of, it's and I've spoken to Arjun about this. No, it's wrong. I feel like it's just terrible when you see, yaar, what is funny is target funny. people. What is funny is funny. I mean, I have laughed on it also. But I don't get this of people like abusing to put down a person. Correct. Make fun. That's okay. You don't have to go so personal. Bilkul. And then that is what I didn't agree with,
and get personal on other shit and all that stuff. Make fun, nah. Nobody's stopping you. Make fun. But there's no way. I don't think you can even stop people, and you shouldn't also. See, we are public figures, yeah. So part of it is that people have the right to criticize you. You have to be okay with that, and I'm fully okay with that. That's what I signed up for. There are enough pros also I get. And I'm sure you get criticized as well, because you're a public figure today, you're putting your content out. So you have to be okay with getting criticized, whether it's bad, whether if something sucks, it sucks, man. People are going to say it sucks. They don't like it. What are you going to do? No, it doesn't suck. We are here because of the audience today. There's no other reason why we are here. But when people start paying for shit, when people start doing fake shit, which today it is manipulatable. I can't lie about that. I mean, you know this. We all know this today, that it is manipulatable. You can buy a bunch of creators to set a narrative and not set a narrative. I find it really refreshing कि आप जिस तरीके से इसको देख रहे हो. कि आपने कहा है कि आपके भाई बल्कि कभी-कभी हर पिक्चर के बाद he'll read bad reviews to me. After every film he'll read me bad reviews, my brother. It's funny. I love this though. बहुत ही मजेदार है. I think ये See, sometimes you get to learn something from reviews. There are certain reviews that honestly you can get to learn something from. And if everyone is saying one thing regularly, then there is some truth in it. I definitely feel I need to work on my voice in a lot of roles, and which I have time and again. I have a lot. Body language, that I fidget a lot. I feel where there's dancing considered. I like dancing. I love the art form a lot. I love it. That's why I did ABCD2 and Street Dancer. But I do feel sometimes I put in way more energy than needed. And that with age and maturity, I'm realizing in characters. So I've tried, like in Hai Jawani, the comedy is less slapstick and more situational, I've tried to do. And different. I've tried to be within the situation and do whatever, not step out of insecurity. So. वरुण, एक जो चीज आ रही है दिमाग में कि आपके your career started with 11 back-to-back hits. Yeah. For a person like that, I would imagine आपका तो ego outsized होना चाहिए था. But somehow I see you as this really grounded person. How does that even work when you are coming in and you have all of these back-to-back successes? आप कैसे उसको मतलब seriously नहीं लेते हो? Let me say, I'll be arrogant with arrogant people. If there's someone arrogant around me, then I'll be arrogant with that person. And there are enough arrogant in our industry. Okay. But otherwise, I'm not arrogant. Otherwise, no, I don't want to be. It takes a lot of time and practice to understand that success and failure have to be treated in a similar way, because it will keep changing. So you have to try and be the same. Success हो भी गया तो आप celebrate कैसे करोगे? क्या करोगे आप? आज मेरी तरफ से सबको दारू फ्री, वो तो नहीं करने वाला. कर सकते हो एक पार्टी में, दुनिया में तो नहीं बांट सकते. So what is the way you सुबह उठ के I have to do the same things whether it's success or failure in my personal priority wala life. So you do be the same. You do be, obviously it makes you happy. Border 2 succeeded. It made me very happy. It made my wife very happy. Parents very happy. And आपके performance को भी बहुत praise मिली उसमें. Yeah, so that felt great. That felt great, you know, playing Major Hushar Singh, Dahiya. But now on to the next one. Now the next one is there. Are you this calm and composed जब आपको failure भी मिलता है? जब पहला आपको first failure आपको जब मिला था, how was? I was upset. I was pretty upset. What did you learn out of that? I went away to some MMA camp with my friends. I got kicked in the stomach. I felt bad. I didn't feel good. Okay. I still feel bad if something doesn't work. I like boxing. I like mixing martial arts up and all. Now a little lesser with age because I don't want to get hurt, you know, for the big screen. I don't want to injure myself. And anyway, you get injured so much, yeah. Which was a thing that genuinely like affected you? I think Kalank and Street Dancer affected me. Kalank was such a big release. Also, it was my first failure as such. Correct. And Street Dancer, because I put in a lot in that film. I felt I was too overtly involved. Maybe I should have not been so involved. I started getting involved in too many things I was not supposed to get involved in. And I started overstepping. And that's my fault, I think. I think Remo sir is an amazing teacher, choreographer, director, and how he is with his people around. I just worked with him again also in Hai Jawani.
He's choreographed Chunri Chunri. And I love him. Him and Lizelle have such a great relationship. But there were too many things I was doing which I should not have done. I'll be man enough to accept that. In terms of? Too many things of how, what the music should be, or what this should be, what that should be. So the film started getting away from what it should have been. And I feel that now I hear that Remo sir is doing ABCD3 with Raghav. So I wish them both the best of luck. And I think he's going to smash it out of the park. I think he's going to make a great film. He's incredible. He's a great guy also. Yeah, both of them. Absolutely deserves it. मुझे आपसे सवाल है एक्चुअली जो बहुत ही मैं सीरियस इन द सेंस ऑफ आई योर परफॉर्मेंस जो मुझे सबसे अच्छी लगी है अभी तक की वो है अक्टूबर. आई वाज आल्सो वेरी डीपली अफेक्टेड. मैं काफ़ी दिनों तक उस पिक्चर में सोचता रहा, डैन के बारे में सोचता रहा. व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, एक ह्यूमन लाइफ के साथ कुछ होता है, सब लोग मूव ऑन कर जाते हैं. आप ग्रीव नहीं करते, आप टाइम नहीं देते, आप सोचते नहीं हो, आप फील नहीं करते. आई वांट टू एक्चुअली आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन कि आप कभी उस सिचुएशन में रहे हो as Dan where you have felt as deeply as him? Yeah, I have. I think I have. It happened to me later on, but when I did the film, I'd never been through such a situation. But I've spoken about this before, that when my driver passed away, he literally passed away in my arms, Manoj. That's when I went through this, because I could not understand the world around me moving on. I didn't understand that. Everyone moved on. Everyone. I think maybe in my team, there were few people, maybe Mubarak, who's my bodyguard, he was there. He did a very sweet thing that we went to the beach and we wrote his name over there, Manoj's. And yeah, I mean, I didn't get it, how people moved on so fast. For me, I think it took me a couple of years to finally be able to make sense of it. And I don't know why. I was made to feel by everyone around me that I'm wrong in not moving on. And at that point, I had a lot of resentment towards everyone in my family, everyone. I had resentment towards my mom, my wife, everyone. I was angry that how dare they not, how can they just. But then what I did realize this thing that I had not, maybe they had seen such situations in their life. Natasha had lost her grandmother at an early age. My mom had lost a sister and so many other people. So they've been through these things. The only thing you can do is move on. The only thing you can do is take the next step. There's nothing else you can do. You can grieve, but that grieving is a very personal thing. And being stuck in that thing. And even today, like I have such a core memory of my parents where they cry for their parents or they cry for their siblings. Even today, it will bring a tear to their eye. So it never really goes away, does it? And yeah, man, that was hard. I'm in the, I would say, bang in the middle of grieving. I lost my dad last year. I'm so sorry. No. So for me, this was a personal question also, because, I wanted to actually know from you. What was it? Not, I mean, this is different. What was it that eventually made you recognize कि आप कैसे, बहुत मुश्किल होता है, I think थोड़ा spirituality, I started reading the Bhagavad Gita and lot of other books, started speaking to people about it. I spoke to my father about it. Because having been older, he's lost a lot more people. This is one part of life which जो होना ही है सबके साथ. उन्होंने क्या बोला आपको? कि होना ही है, ये सबके साथ होना है. ये सबके साथ होना ही है. ये एक चीज़ है कि तुम जो भी हो, तुम ये रोक नहीं सकते हो. मेरा कुछ अलग था, क्योंकि obviously I play hero on screen and I had a chance to save his life also a little bit, which we got him to the hospital in time and all that stuff. Me and Ishita was there with me that time. My other manager, we got him to hospital that time. So, in time, alive. And that's the way it happens. So, just very shocking, but I'm grateful. Then both these friends of mine, Aman and Ankit, reached there. We are so fragile as human beings. We don't realize it. We have to be very grateful to the universe, to God, to Krishna, to
whichever power you believe in, be grateful that you're getting to experience these good experiences also. नहीं बिल्कुल, आई थिंक जो पहली बार होता है ऐसा लॉस देखते हो या फील करते हो, द वर्ल्ड स्टॉप्स मेकिंग सेंस, राइट? आपकी रियलिटी शिफ्ट हो जाती है। मेरे लिए भी मतलब फॉर मी इट जस्ट नथिंग हैज मेड सेंस सिंस देन, यू नो। यू प्रीटी मच एक दुनिया में जी रहे हो जिस दुनिया के अंदर यू नो देयर इज अ ट्रुथ, यू नो। आई मीन लाइक द पिक्चर ओवर हियर इज मी एंड माय डैड ओवर, you know, of one of my favorite pictures of my father and me when we were the favorite picture of my father and me growing up. And yeah, मुझे मतलब समझ ही नहीं आता कि how is there a world in which he does not exist, you know? What kind of a world is this? So I mean, again, I thank you for sharing. It really No, thank you for sharing as well. And this is something which when you get a bit older, आप थोड़े बड़े हो जाते हो उम्र में, तो ये सारी चीज़ें, ये थॉट्स आप ये सबके साथ जीते हो, आप ये सारी चीज़ों के साथ जीते हो। एंड पेरेंट्स हेल्थ इज़ अ वेरी बिग कॉन्वर्सेशन, वेरी बिग टॉपिक, जो हमारे जो हम उम्र है या जितने भी एक्टर्स आई वर्क विद, ये सब वी ऑल, जितने मेरे दोस्त हैं, वी आर ऑल डीलिंग विद दिस यार। तो इवेंचुअली ये एक इक्वलाइजर है, ये दुनिया का एक इक्वलाइजर है। आप अमीर हो या गरीब हो, ये आपके साथ होगा, डजेंट मैटर, आपको फेस करना पड़ेगा। तो अभी बोलना आसान है सबके लिए, बट you had a कड़ा, I mean, I was just thinking, thank you Varun. कोशिश कर रहे हैं हम लोग, यही तभी मैं बात कर पाता हूँ when I able to talk about it, it kind of मुझे लगता है वो थोड़ा gets into that. हाँ, वो थोड़ा बट वो burden कम हो बहुत जाता है, प्राउड just to हो be able गए to- जिस तरीके से you're conducting yourself और जिस तरीके से आप कर रहे हो। आपका इतना शो इतना बेहतरीन चल रहा है, मेरे को इतने लोगों ने कितना प्रेज किया है कि it's actually doing so well. Thank you so much for इतना दिल से No, आपने thank express you. किया। Yeah, this has really been very interesting. And अमृत ने जब इसके बारे में बात भी किया मुझसे, और मुझे बोला भी था ये फिल्म इंटरव्यू नहीं होगा, it's going to be about other stuff, and genuinely been therapeutic, I would feel in that sense. That's really kind of you to say. मैं क्योंकि हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे और आपने एक चीज़ बोली, your father was also in the ICU very recently. Yeah. And you've said about aging parents. मैं देखता हूँ कि आप मतलब इनफैक्ट वही मुझे जो डैन में भी आप दिखते हो, आप में भी डैन दिखता है कि एक ना द रीज़न दैट बॉय वाज समबडी हु हैड यू फेल्ट सो डीपली, क्योंकि वो एक इनोसेंस थी उसके अंदर, और वो इनोसेंस जब दुनिया में इतना कुछ हो जाता है कि जहाँ आपके इनोसेंस को छीन लेती है दुनिया इन सम वे, दैट इज़ व्हेन यू फील द डीपेस्ट. एंड आई फील लाइक आई हैव सीन, यू नो, फ्रॉम एवरीथिंग दैट आई एम हियरिंग अबाउट यू, you've had a tough few years, you know, with all of this. How does that change you? आप कैसे as a human being, as a man, जब you see your father, जो आपके हीरो होते हैं, जिनको आप you know, you've always looked up to him and admired him. We have to start taking care of his health. ये जो चीज़ें होती है वो बहुत अचानक होती है, I understand, but with him it is about health and taking care of other lifestyle changes जो चाहिए थी, तो वो implement करनी थी. And credit to my father कि उन्होंने बहुत अपना ख्याल रखा है उसके बाद. But you're helpless in that moment. आप क्या ही कर सकते हो. But his passion and his resilience, even in the weakest of moment, was something which inspired me like nothing. मतलब I got so much inspiration कि a man in the ICU bed is telling me to go and work. वो कह रहा है जाके काम करो. Insane. प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट मत करो, जाके काम करो. That's insane. And that just gave me the kind of, that gave me a lot of power actually, that situation. Wow. That he said, even in the weakest situation, you fight back. You don't give up. And me and my brother both went. I could not shoot without my brother that day. I was shooting with Mrunal. She was there that day, and she was also very sweet at that point. And Insane. I can't believe it. मतलब पापा लोग ही ऐसे होते हैं. मुझे अभी भी याद है कि this is obviously before my father passed. He had some surgery to do in the hospital. हाँ. It was not a very major operation. But he just one day is like, अच्छा मेरी कल सर्जरी है, मैं जा रहा हूँ, तो ठीक है, तो मैं आपको परसों मिलूंगा. And I'm like, you know, like, are you saying कि I should also come with you? आप अकेले जा रहे हो? नहीं, तुम्हें आने की क्या जरूरत है? मैंने कहा तुम्हें आने की जरूरत क्या है पापा?
आप मेरे पापा हो यार, मतलब आई कांट जस्ट लेट यू गो टू द हॉस्पिटल ऑन योर ओन। ही इज लाइक नहीं कोई बात नहीं, मैं चेक इन करा लूंगा, चेकआउट। मैं कहा होटल थोड़ा ना आप चेक इन चेकआउट कराओगे, इट्स अ हॉस्पिटल, आई वांट टू कम विद यू, यू नो। एंड ही वाज थोड़ा, इट्स सो वियर्ड समटाइम्स टू सी योर फादर, यू नो, कि मतलब इट इज रेजिलियंस आल्सो, बट इन सम वेज मुझे लगता है कि यार ये चीजें थोड़ी फादर्स को चेंज भी करनी चाहिए अपने बारे में, कि कहाँ उनको ना दे शुड आल्सो एक्सेप्ट द लव दैट they're getting. Yeah, that they get from their children, because you know तब हम भी शायद सीख पाएंगे वो प्यार देना भी और समझना भी। यार वो प्यार देना भी ना हैज टू बी टुवर्ड्स हेल्थ। आई फील अगर कुछ सिस्टमैटिक करना है ना, एवरीथिंग शुड बी इन्वेस्टेड इन हेल्थ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्यार देना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मिठाई खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, पूरी भाजी खिलाओ। प्यार देना मतलब आप उनकी लाइफस्टाइल चेंज करो, वो अगर आप, और टाइम देना पड़ता है उसके लिए, सो यू हैव टू गिव टाइम। प्यार देना मतलब टाइम देना। आई नो वो इमोशंस में इंसान ना कभी कभी कुछ भी कर देता है, ये प्यार है, मैं हूँ, क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, वो चाहिए। प्यार देना हैज टू इक्वल टू द टाइम गिवन इनटू केयर। सो वेल सेड। मैं किसी ने कहीं मैंने पढ़ा था इनफैक्ट कि अगर अपने पेरेंट्स को, जैसे आप कह रहे हो ना, अगर अपने पेरेंट्स को ट्रूली आप प्यार करते हो और उनकी चिंता करते हो, आप उनको एक्सरसाइज कराओ। आप उनको, मतलब अडल्टिंग इसी को बोलते हैं कि आप ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं तो आपको लगता है कि अरे अभी तक तो मैं लड़का था, अब मैं सडनली आदमी बन गया। यू नो व्हेन थिंग्स लाइक दिस कीप हैपनिंग वन आफ्टर द अदर। मेरी ज़िंदगी में भी पिछले 2-4 साल से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं दैट रियली हैज़ शेकन मी इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा मुझे बड़ा बनना ही पड़ेगा। लाइक यू टोल्ड मी, एंड अगेन इफ़ यू, ऑफ कोर्स इफ़ यू आर विलिंग टू शेयर, आपने मुझे बताया कि जब आपकी डॉटर भी हुई है, यू नो, शी वाज डायग्नोज्ड विद, यू नो, after some years, so the reason why I felt comfortable to share this is more एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो बहुत 1-1.5 साल के बाद उनको डायग्नोज हुआ था, शी हैज DDH, विच इज द हिप स्लिपिंग आउट ऑफ द हिप सॉकेट। यू नो वो सॉकेट में नहीं है, तो एक पैर लंबा छोटा हो जाता है, तो जिसकी वजह से वॉक आपकी टेढ़ी हो सकती है, यू कांट रन प्रॉपर्ली, यू कांट वॉक, यू विल गेट आर्थराइटिस अर्ली, यू कैन गेट स्लिप डिस्क अर्ली, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका बहुत अच्छा डायग्नोसिस होता है बर्थ पे ही। इंडिया में हर जगह नहीं होता है ये पार्ट, एंड बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत बेहतरीन है हमारे देश में, जो इसका केयर करते हैं। हमारी ट्रीटमेंट डॉक्टर तरल से हो रही है एट HN Reliance, एंड डॉक्टर तरंग ओवर देयर, शी ऑल्सो हेल्प्ड अस अ लॉट, एंड इवेंचुअली वहाँ पे गया, एंड शी डिडंट नीड टू डू अ सर्जरी। लकीली उनका एक प्रोसीजर में वी कुड पुट द हिप बैक, बट शी हैज टू बी इन अ स्पाइका कास्ट। दैट मीन्स the child has to be in a cast for 2.5 months, which is extremely difficult. And putting a child just into anesthesia at that age, and then the child, because आप बच्चे को क्या बोलोगे, आप उठोगे और आपके ऊपर कास्ट होगा, बच्चा समझेगा नहीं उस वक्त। So imagine a child just goes to sleep and wakes up with a cast around. But children adapt, बच्चे adapt होते हैं, तो इस चीज़ का नाम DDH है। If you, मैं हर पेरेंट को बोलूँगा, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हाउ डिफिकल्ट इट्स बीन फॉर मी एंड नताशा एज पेरेंट्स। हम लोग वही कर रहे हैं जो हर पेरेंट करता, अपने बच्चे को प्यार करते हैं हम। पर अगर मैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हर बच्चा जब चलने लगता है, या अगर आपको कुछ ऊपर नीचे दिखता है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन के बारे में, इसके बारे में पूछ सकता है। इट्स कॉल्ड DDH, ओके। और ये इतना कॉमन नहीं है, नहीं होता है, हम वैसे भी इतनी चीज़ों के बारे में वरी करते हैं एज पेरेंट्स। दिस इज़ वन मोर थिंग, एट अ अर्ली एज अगर डायग्नोसिस होते हैं तो इट्स टोटली क्योरेबल, एंड यू आर गोइंग टू बी फाइन, एंड शी इज फाइन नाउ। I mean, she's still in a brace now. We're still getting into the mobility part, but the cast is out now. That's great. Touch wood, the cast is out. That's so good. And we have great doctors and everything will go fine. मैंने इनफैक्ट एक पूरा बुक लिखना है मुझे इसके ऊपर, तो मैंने लिखा है। Because that's पहली बार I really felt like a parent जब ये हुआ और मुझे पता चला ये हो रहा है। But lots to learn यार from बच्चे से भी सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि children are amazing. Children are really amazing, and no, absolutely. I hope कि ये किसी को help कर पाए, अगर ये कोई देखे तो it helps someone. No, as you said, I think first of all again मैं तो यार मैंने आपको I think उसमें, और मेरा ये पर्पस ये बोलने के लिए नहीं कि मेरे लिए बुरा रखो कि मैं एक एक्टर हूँ, मेरे साथ ये भी होता है, वो भी होता है। यार वो हर किसी के ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है। जब काम करना है हम काम करते हैं, आप काम को जज करो, वो पिटी लेके काम को मत जज करो, वो रीज़न नहीं है। बट दिस इज़ मोर कि जो अभी पेरेंट्स बन रहे हैं, माँ बाप है, या किसी के साथ अगर ये हो रहा है, तो मैं बहुत एडमायर करता हूँ कि आप
बार बार ये भी बोलते हैं कि आई डू कम फ्रॉम प्रिविलेज, यू नो. मैं इनफैक्ट आपके ना जो आपने पॉडकास्ट किए हैं उनके ना कमेंट सेक्शन में देख रहा था. The number one comment that comes for you is the most genuine person that you know that we have seen in a podcast, and I think that genuineness does come across. You know, मैं तो सच में यार वरुण, I can't even मतलब मेरी बेटी को ना जो शुरू में जॉन्डिस हो जाता है एक हफ्ते के अंदर ना, हाँ, they screen the child. स्क्रीन द चाइल्ड. मैं तो उस दिन मतलब एक दिन वो आई है घर, 3-4 दिन के बाद वापस आ गए. वापस जाना पड़ा हमको हॉस्पिटल लेकर, एंड देन वी हैव टू गिव हर अवे फॉर 24 आवर्स. That's scary, yeah. मुझे तो ये मतलब लोगों ने बोला भी था कि इट्स स्टिल ओनली हो जाता है, बट टू सी योर चाइल्ड जस्ट अरे पहली बार बच्चा बीमार पड़ता है, कॉफ होता है, ये होता है, तब जो फटती है, इतना स्ट्रेस, you know. But you know what I also appreciate again, I think about parents of millennial parents, you know, I mean fathers, mothers तो हमेशा I feel like, I also don't want to glorify it, but I feel like mothers and women in general are more resilient than a lot of us. I mean, again, मेरा perspective towards, अब कैसे नहीं चेंज हो सकता perspective when you see your wife pregnant and you see what she's going through in labor, what 9 महीने बच्चे को कैरी करना. मैं तो मतलब ऐसा it's again a reality shift. आप देख रहे हो और आपको लगता है कि यार this is how could anyone have any complaint against women. जब आप देखते हो एक अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट एंड when you see her deliver child, at any point of time anybody has said anything wrong about women and you're just like how. वो फिर वो हो जाता है. आपको पता है कि क्या मतलब what a woman has to go through. I felt this thing towards my mom actually. कि how did I fight with this lady so much? But then after 2-3 days I started fighting again. So then it's just But tell me a little bit more about, I want to talk about Lara also, but मुझे नताशा के बारे में भी जानना है कि just I think it's so cool to see someone who was so successful in you know the first 11 films as we have discussed. उस समय आपने decide किया to commit, you know, which is not something that you see very often in the film industry. And I also feel like in general आज के ज़माने में तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के डर भी हो चुका है commitment को लेकर. सब लोग ना अभी situationship की दुनिया में रहते हैं. Because it's better for me to be with that person, you know, with that one person who I love. It's also selfish. Let me be honest. It's also a very selfish decision. It's also selfish that I am with someone that I do love. Otherwise, that person would not be in my life. Fair. You know. और आपने ये भी कहा है again. But she's leading a different life. She's not an actor. She's not famous. Yeah. She's having. Obviously, we both enjoy a lot of the perks of all this. Yeah. But she leads a very different life as compared to me, or she tries to at least. Yeah. Because she enjoys that more. You've also said, आपने पहले बोला भी हुआ है कि वो आपसे बहुत बेहतर इंसान भी है, आप सीखते भी बहुत हो उनसे. What is it that you've learned from Natasha? Empathy, care, kindness, and enjoying simple things of life. And then I realized कि यार इसमें actually ज़्यादा मज़ा है. जाके एक पार्क में बैठना, feeling the grass, इसमें ज़्यादा मज़ा है. जस्ट एक वॉक पे जाना ज़्यादा मज़ा है. तो दी सिंपल थिंग्स की काम को छोड़ के उसके अलावा बहुत अच्छी चीज़ें हैं. What has she learned from Varun? Well, I have to ask her. I don't think she learns anything. No, she has learned from me. I think I made her a far more hyper person. So I think that's not a good thing. She was never hyper. So she's learned something bad from me. क्या बात है. What is the best part of being a girl dad? The best part of being a girl dad is just the cuteness. I mean, just that cuteness is unbelievable. Matlab, she can make me do anything in the world and I'll do it. बिल्कुल. Anything. She's just unbelievably cute. I can't. You're talking about her so much, I want to go back to play with her now. मेरा भी वही है. मैं मतलब जब ज़्यादा बात करते हो then you start remembering and then you're like, मैं तो मेरी बेटी का नाम नूर है. मैं तो ऐसा हो गया हूँ कि मतलब एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब आई एम टॉकिंग अबाउट हर नो, तो सबसे पहले तो मेरा ये होता है कि ये देखो. हाँ, ये फोटो. I know. The first thing I want to do is show people the photo and say देखो मेरी बेटी, देखो मेरी बेटी, देखो मेरी बेटी. मैं पहले सोचता था कि यार ये पेरेंट्स करते हैं क्या ये बहुत और अब मैं वही बन गया हूँ. I am exactly that person. I am exactly that person right now. Do you feel like you become softer after? Yeah, 100%. Much more. Last question on this before we go to the rapid fire. अगर लारा ये इंटरव्यू या ये कॉन्वर्सेशन देख रही है आफ्टर फ्यू इयर्स, इज देयर अ मैसेज जो आप उनको देना चाहोगे या कुछ कहना चाहोगे? Just I love you, Lara. That's it. I don't think I can say anything more than that. But you, like we said, now that men don't say that enough, so I would just say I love you.
See, honestly, I think being a girl dad is also about responsibility. The love और वो emotion जो आता है. But अभी के लिए मैं वो phase में हूँ. I'm in that responsibility phase because my child is going through something. So I'm very much in tune of that I have to be there. Also because my wife is there for everything. She is there for every breath. And that is a tough thing to compete with. And I don't know if you feel that I as feel well. it too. Because that is the thing. I'm used to being excellent and excelling in everything and being the best in everything I do. In this, my wife is first and I'm second. And I don't like it. I want to be first as well. So, but I have a profession also that I'm working in. So that becomes difficult, which obviously my wife understands. But, Dad guilt, you said. yeah. Dad guilt, if you want, I can tell you a lot of things. I feel a lot of dad guilt, man. I feel like even sitting here right now, I'm feeling guilt. Like, because I'm not with her. And because of this, I've also taken some time off from work because of Lara. And obviously you have to do other stuff also in life and enjoy other stuff also. But I do feel that dad guilt as well. And you don't want to miss out on certain moments, yeah. And पहले मेरे को लगता था ठीक है यार मैं भी बड़ा हो ही गया. But there are certain things, I don't know. Now you've spoken so much about her, now I'm only remembering I'm my with you. daughter in that sense. मुझे भी बिल्कुल वैसे ही फील होता है. The thing that I've learned and realized most कि मुझे the thing I can do most for my child is be as present as I can be. तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ. That is जितना हो सके I am also changing my life around the timings of the child. Correct. कि मैं जब वो जागी हो मैं कितना कि उसके ये साथ ये टाइम पे सोएगी तो मुझे ये टाइम पे घर होना चाहिए. That's the same thing. That's the मैं same बहुत thing. सारे इनवाइट्स को मना कर देता हूँ. बहुत कितना हो सके मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ. कॉल घर से लेता हूँ. तो वो सारी चीज़ें भी शुरू कर दी. एंड आई रियली होप दैट यू नो when I am she's growing up, when I am a little older, I can look back and say that I did my best. You know, I gave time. I gave time. You know, but again, thank you, Varun. This has Thank you. been one of the sweetest. Why can't you say best? Best तो है. Sweet तो आप सबको बोलते हैं मैंने देखा है. सच है या नहीं? स्वीटेस्ट नहीं बोलता. बहुत अलग अलग चीजें बोलता. ओके चलो. One of the best. तुम सबसे खराब गेस्ट रहे हो आज तक. Who's been your worst guest? I can tell you off camera. Why can't you say it? I can't tell you on camera. Break it. तो मैं बताऊंगा off camera. Okay, we have 3 very quick rapid fire segments. This is a segment presented by our associate partner Dove Men Plus Care. It's called the Man Enough to Care segment. Okay. I have a question for you. आपको जो दिल में आता है please बताइए. So the question is, a man in your life who was man enough to unlock a softer side and show care towards you. Yeah, I would say this would be Karan. Oh. Karan Johar would be that person because I've seen no matter what, but anytime there's a hardship, he's there. He's one of the first people who's there. I can say this about 2 people. I can say this about him and Salman Bhai. That whenever there's a hardship, these people suddenly spring up in my life always and consistently. Wow. I've always been there through hardships, professional or personal. And Karan, because professional or personal, he's always there, not only for me, for so many people, various people. And I want to say this because there's so many things publicly that are said about him and said about him in so many wrong ways, you know, sometimes. And there's no point defending those things. But at least for me, I have seen he's always been there and he's more man enough to do that, you know, and he's a man enough to stand by you. When, you know, people are against you also, he's man enough to stand by you. That's beautiful. How does he show up? Like physically just... It's a call. See, it's a call. It's checking in. It's a message. But anytime I've seen that there are problems, yeah, he's there. Not only, and trust me, it's not only for me, it's for a lot of people. No, but I must say... I just hope people should say this about him. I just wish that more and more people say this about him. I must say thanks to Amrit, Karan has been a part of Yuva's journey as well. He's been so kind to us and he's constantly supported us and stood by us. And even like, again, you know, just when he found out about my dad, you know, he just said such a sweet thing to me and such a beautiful, wise thing to me that it really moved me. I think that he's again one of those people who actually really does care. So yeah, that's you know what I mean. Like you'd be like, why would this person go out of his way to message me? He does this. He does these things. It's a great quality. Does this. Amazing quality. Oh, thank you so much. Thank you. हमारा जो एक fun segment है, it's called kind shoutouts.
मैं होस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं होस्ट करता हूँ. The sexiest man you know, me. No, I'm hosting. This is sponsored by anyone? This is not sponsored by anyone. Okay, the sexiest man you know, Amrit. The kindest man you know, my friend Aman. A man from the industry who is a pookie. Who's a pookie? Who's a pookie? Aditya Roy Kapoor. A man you love being a vela with. Or Kavish. A man who has a Sinu energy. That's only me. I don't think so anyone else can have a Sinu energy. A man who looks like a sweet innocent Swami but is a harami. Sweet innocent Swami but is a harami. I would say me only. Who else? The Dan to your Shuli. Oh, the Dan. My other friend Ankit, who's very sensitive like you. And very sweet also. You're Judwa in the film industry. My Judwa in the film industry, I don't think there's any Judwa. But at an earlier time in our lives, they would call me and Alia. We had very alike behavior. The Kabir to your Junaid. The Kabir to my Junaid is... इतने सारे पढ़ने नहीं थे, but I'm really happy that... Man who gives the best hugs. Man who gives the best hugs. Akshay Kumar, he gives some very rough hugs, but all your bones can crack. Man with the best smile, me. And your favorite girl dad. My favorite girl dad, I think The Rock, who I really look up to. Oh, yeah. The man with the best fashion sense. Aajkal everyone dresses badly, I feel, but a man with the best fashion sense. Saif dresses well. Man who gives main character energy. Oh, The Rock. The man who you have cried in front of the most. I have cried next to a woman the most, and that's my mother. She made me. Funniest man you know. I find Cyrus Brocha very funny. And I find his podcast also very funny. So shout out to you, Cyrus. The best dancer you know, Prabhudeva. Fair. You agree? Yeah. अगर अभी पढ़ रहे हो बाकी ये भी Oh, इतने? मैं 22 rapid fire questions. मैं 10 पूछने वाला था. फिल्म इंडस्ट्री में आपका हीरो कौन है? फिल्म इंडस्ट्री में मेरा हीरो है सलमान खान. And the most dilwala man you know, I would say Karan Johar. A man you'd go to war for. Oh, it's a big one, buddy. My brother. Most vulnerable man you know, I think Nikhil. I just want to say that this was a segment जो मुझे होस्ट करना था, जो वरुण अब खुद होस्ट कर रहे हैं. Thank you, This we can read. These are all good things. हाँ, ये पहले रीड करना चाहिए था ना. इस सेगमेंट का नाम था काइंड शाउटआउट्स. इस सेगमेंट का नाम है men complimenting men. Men complimenting men. Varun is a kind person that everyone needs in a friend group. This I'll read. Please. Please come back, Varya. We all miss you. This is for Alia and me. Oh, this is for Siddharth and me. Come back together. We miss you. Sid, hope you're seeing this. Oh, Bidi Jalaile. These are by the way सारे आदमियों ने लिखे हैं. अच्छा. We have picked up comments जो आदमी लिखते हैं आदमियों के लिए. This is a big one. I may not be a diehard fan of the actor Varun, but I genuinely love the person Varun. He knows that he's flawed in acting, but I don't know I'm flawed in acting. But okay, thanks. But he's not unrealistically boastful of his success. Okay. He's 100% आदमी नहीं लिखा है. He's down to earth and shows in his eyes he has the hunger to keep learning and getting better with time. Also, he is very respectful and friendly towards his female co-stars. ये सब लिखने के बाद तुम टिकट खरीदो. फिर ठीक है. Okay, we totally deserve another rom-com with Varun and Shraddha. And Sir Nolan की न्यू फिल्म आ रही है. दिलवाले देखे बिना समझ पाऊंगा ना? नहीं समझ पाएंगे तो दिलवाले देख लो. नेटफ्लिक्स पे है आई थिंक. देख लो, जाके देख लो पहले, फिर देख ला. You don't have to read all ना of them. शादी कर ली, अब कोई नहीं बोल पाएगा कि वो सलमान खान को कॉपी करता. हाँ, ये करेक्ट बात है. शादी तो मैंने कर ली है, तो नहीं बोल पाओगे अभी. That's a good one. I like that. This is with they've written this with Robert De Niro. Judwa 3 when and the best actor with Robert De Niro. I like this segment the best. We should have done this much earlier. I love this. Varun Dhawan is the most genuine Hindi film actor who attracts mass and class both from kids to elder. Everyone loves him. This is true. I'll keep note. हम चाहते हैं कि आप you go back home with a smile. ये दिखाऊंगा घर पे. मैं आपको बहुत दिनों से मैसेज कर रहा हूँ लेकिन आपका कुछ रिप्लाई नहीं आता है. आप दिल से बहुत अच्छे हो लेकिन आपको बहुत फैन सपोर्ट करते हैं इसलिए आपके इधर मेरे मैसेज पहुँचते ही नहीं है. अच्छा, शम पहुंच गई आपकी मैसेज. पहुंच गई, मेरे पास है आपकी मैसेज. Varun and his love for his wife, rare to see in today's society, a beautiful romantic love. Always instantly saying he loves her, fallen in love with her in school. Where have I seen such a love story? Nikhil also says he met his wife in college, but I think he's a liar. Nikhil हर गेस्ट को बोलता है so sweet, so sweet.
ये क्या है, ये कौन? अरे लिखा है. Varun Dhawan is not just a brilliant actor but a brilliant person as well. 8 golden hits of Varun Dhawan. Varun Kingdom. Just zoom in on this. Okay. This jar I'm taking was I like this. This is Please the keep gift. it. This is absolutely यार. Whenever I feel low, I'll read these things about हम me. आपको और भी दे देते हैं अगर हमको पता होता कि आप लेकर जा रहे कुछ गिफ्ट दे रहे हो कुछ हाँ गिफ्ट भी अमृत है ना गिविंग हमारा। अरे समथिंग. ऑफ कोर्स यही तो वरुण Thank you. दिस हैज बीन द बेस्ट कॉन्वर्सेशन आई हैव हैड ऑन बीएम मैन यार। Thank you. और मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा आपसे Thank बात you. करके। जेन्युइनली यू आर वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट Sweetest don't say, यार यार। है। अब तो मैं क्या बोलूं, Sweet is like a bad word on the show. मुझे स्वीट, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सबको स्वीट नहीं बोलता। मैं बहुत अलग अलग चीजें बोलता हूँ, स्वीट नहीं बोलता। आप जेन्युइनली स्वीट हो, आप जेन्युइनली जेन्युइन हो, जेन्युइनली ऑथेंटिक हो, Thank एंड आई रियली लव्ड बीइंग सिटिंग विद यू ऑन दिस काउच। Thank you, buddy. आई एम so grateful that you came for this show and to be sitting with you and getting to know you a little bit as a human being. I think this has been a great privilege. Who do you want as your next guest? Who do I Because I'll want? make your dream come true. See, you've got a Oh, wow. wish. Okay, I have only one guest that I'm always wishing for, so Okay. we know who that is. That's complete today, but I'm I saying. hope so. कौन है? दिल वाले, वो हमारे दिल वाले हैं। You want the king? I want like You want the king? I want the king. Actually, that Amrit can do, huh? I know. Before we end, we also have this gift hamper from Dove Men Plus Care. Dove का brand ambassador is Arjun Rampal. Okay. But they can sign me Let me. But you say Dove should sign. I will say. I will say that. I just look in the camera. Now, Dove Men Plus Care, who should definitely sign him on as a brand ambassador because he's absolutely a man who does care and a man enough to care. So this is absolutely for Thank you. you, We guys. also Thank you. have a very sweet Be a Man Yaar hamper, जिसके अंदर मतलब it's not much, but there is a really nice Oh, wow. sweet That's so photo sweet. that we have of yours that we wanted you That's very sweet, to yeah. take home. That is very sweet. हम हमारे सारे एपिसोड एंड करते हैं with just one request. Can I have a hug from you? Yeah, sure. man. इतने ही अपने प्यार से दिल से बातें की। I really just want to hug you now, and I just want to say thank you for everything. Thank you, buddy. Thank you so much. Bro. This was beautiful. I really had such a wonderful time. Be a man, yaar. Please like, share, subscribe man. to We Are Yuva on all social media platforms. But be a man before that. But be a man and be a human and be Varun. But if you're a woman also, you can subscribe. Of course, all genders are welcome. All genders are at welcome. all times. At all times. At all times, you can watch it at any Just point of call time. him ना, up. कभी His भी। number is 982. मैं नंबर भी डाल दूंगा। Thank you, Varun. Thank you.